Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Vrinda Gopika Mataji. Happy birthday to you. Hi, well, thank you. Dandavat pranam to all Vaishnava. Thank you, Mataji. May you never take birth. May you never take birth again. Happy birthday. dear Vrinda Gopika Mataji. Happy birthday to you. Thank you, Mataji, all Mataji. Dandavat pranam. we have more people joining, but we can start because you're already on the call. So who's going first, Mataji? I can go ahead, Mataji. I need to join the meeting. Hare Krishna, Vrinda Gopika Mataji. Hari Bol. Literally, Mataji, you are always on all the calls. That's really awesome. Like you have that, zeal to learn so much, Mataji. So that inspires me a lot. In fact, everyone on the Bhakti Sangha, the way you give an essence of every session and you write down everything. I think I need to learn that actually. And literally you have been, and your service attitude, I know you do a lot of service at temple and all. So that is also really inspiring, and wish that Krishna gives you a lot of good health so that you can gain more knowledge, more bhakti, and do more service to Krishna. And always keep inspiring us, Mataji. Hari Bol. And wish you a very, very happy Krishna conscious birthday, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा हरिका माता जी दंडवत प्रणाम. प्रे फॉर मी कि हमें मेरी रति मति और ये जो बॉडी माइंड एंड सोल रति मति और गति कृष्णा और श्रील प्रभुपाद की शरण में रहे और गुरु परंपरा के और वैष्णव का स्पेशली भक्ति संघ का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन में. हरि बोल. हरे कृष्णा दंडवत. हमेशा माताजी, हमेशा हम प्रे करेंगे. आप पहले से ही वो कॉन्शियस में है माताजी, आप हमें इंस्पायर कर रहे हैं तो बस है. आप कृष्णा का आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं. धन्यवाद प्रणाम माताजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. Who wants to go next, Mataji? Can I go, Preeti? Go ahead, Mataji. Oh, is somebody there, or is it okay for me to do? Radhika Kasturi Mataji will go, and then afterwards, Mataji. Okay, no worries. Sorry, I didn't hear anybody talk about, of course, there's no need, but Mataji, first of all, my humble obeisances to you. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Sri Guru and Gauranga. Koti Koti Dandavat Pranam to you, Mataji. Koti Koti Dandavat Pranam to Prabhupada. Mataji, so many things. I didn't even write any points that shouldn't forget this time. But one thing that reminds me of you is your love, Mataji. I feel that motherly love whenever you come to the call, whenever you bless devotees, whenever you attend any satsang in Bhakti Sangha or other calls, that love and warmth that you provide, I don't think I have seen that anywhere else. I really, really keep you in my mother's stana, mother's place, because I mean, that much you're full of love, Mataji. I don't know what else. I mean, this love can transform people's hearts. This love can do anything, because whatever you say, I will be able to listen to you because of this love. And the love you show, it is completely impartial, not only to me, anybody for that matter. You love everybody in Bhakti Sangha. It could be a person whom you don't even know, but if that person sings and gives a good rendition of some bhajan, then you will encourage that person and you will tell him, oh beta, you should do more and more and more and more. And not only that, you will engage that person in the service of Guru Gauranga. That is how much nice heart you have, Mataji. Such a pure heart.
and the heart that is filled with love for every devotee. You are such a senior devotee, Mataji. Nobody can compare with you, but you just stoop down to the level of us, and you give us so much encouragement. And Mataji, that is unbelievable. Your humility is so, I feel sometimes awkward also. How can I mean, when will I develop that the humility that you have for all devotees? If somebody is working 24/7, somebody is renditioning Krishna Katha, somebody is initiating Japa conference, somebody is doing this, you will bring all the gopis names, all of them, and you call them lovingly gopis. So who can we? Wow, such a exalted name. The word gopi itself is such an exalted name, and you lovingly call each and every devotee gopi, and that is also something that I admire a lot, Mataji. So many things to say. I mean, sometimes I want to attend the call just because you are there, but because of my busy schedule these days, I'm just not able to juggle between too many things, between work and I wish I retire soon and come to Bhakti Sangha and be leisurely talking to all of you, but I'm always in a time crunch, it looks like. But it's all Krishna's plan, no complaints there. And then you lovingly feed devotees with so much prasad, Mataji. If I were just next to your house, that's all. all that, yummy prasad and, the love that you pour while making prasad, all that, devotees are so blessed to get that association of yours through prasadam. And you make it a point to involve all your family members in some activity or the other, be it your daughter. Oh, yes, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. So the prasadam is something that is unique to you, Mataji. You play the quantity I can see, that shows your heart, because people's heart is measured by the quantity you make, and I'm so bad at it. I have to accept the fact. My hands are so small. My mom used to complain, what is this, Radhika? Why are you not having that broad, so I always feel, oh my God, it will go waste, it is so, so many excuses for my mistakes, but anyways, I admire that quality. Whenever some person doesn't have that, people start to admire, isn't it? And I'm that person, whoever has that, I admire them, because I admire my mom too. My mom and prasadam, they go hand in hand. I can't complain. Not even a person who has left our house, they have been overwhelmed by my mom cooking and feeding them. It will be to an extent where they will just burst out. At some point, she gets critics saying, oh, you should stop, Revati, you should stop. Cool down. She never listens to anybody. That person will be fed a lot, and at least 2-3 pounds that person will gain if he stays for 1 week. That's all I can guarantee. Like money, I agree. Oh, that is, I just, but you and my mom have lot of similarities that way, Mataji. So I can feel my mom through you. So that's why I come to you sometimes, and I feel that, really, I feel the warmth, and really, I feel that you're one of the persons whom I love so much, Mataji. Thank you for your association. I have so much to say. You encourage Aditya a lot. You consider him as your own son, your own son or grandson, and you're so emotional, Mataji. So emotional. So I don't know if I deserve all that, but I love you so much, Mataji. I love you like crazy. I have so much to say about you and your humbleness, and I don't know, when I come to your age, and how people shouldn't actually take their number of years in Krishna consciousness as a bar. That's something I have to learn from you, because I am just so neophyte Kanishta devotee, and you are like such an experienced devotee, but you encourage me, come to my platform and encourage me. So I'm so privileged and blessed to have your association. Not many people are like you, but so much to learn from you, and so much to say about you also, Mataji. Because of the lack of time, and so many other devotees are waiting,
I make use of this opportunity just to, highlight some of the great qualities that you have. And I consider you as my mother, Mataji. There is nothing else that I can, because I feel so many similarities. I'm sure Preeti Mataji would also agree with that. That innocence, that smile, that pure heart, all that, I can always admire. And thank you so much, Mataji. My sweet kisses to you and hugs to you. And I need your blessings, Mataji. Please bless me so that I'm always in the association of devotees, serving all of you with my loving heart and devotion, Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna, Radhika, Gopi, Dandavat Pranam, all Guru Srila Prabhupada, Srila Gurudev, Shri Radha Gopinath. Mataji, Aditya and you came from different world, Mataji, attending that Shinam Mataji, Shri Bhagavatam class, reading so attentively, and but especially bhajan part, learning each and every Vaishnava are very special. Learning, we all are, nobody is senior and junior. We are learning from each and every Vaishnava. Radhika Mataji, you are very special. Gopi, Hari Hari, Gauranga, Koti Koti Dandavat Pranam to you, Aditya, and the younger brother. Hare Krishna. Arun. Oh, Arun Gopi. Thank you, Mataji. Hari Hari Bol. Thank you, Radhika Kasturi Mataji. Thank you so much. And now we have Anuradha Mataji. Please go ahead, Anuradha Mataji. Thank you, Vinita Mataji. Hare Krishna Mataji, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada and Guru Maharaj. All glories to you, Mataji. Wish you a very, very, very happy birthday. You're, of course, Krishna conscious, so me saying it doesn't make sense. But happy birthday, Mataji. Thank you for your association every morning and mid-morning. And we all know, right, that the wonderful realization and the points, the way you summarize the class, that shows I can never do that. That shows your, the level of absorption in the class. And I beg from you, it says that on the day of appearance, the Vaishnavas are very, very merciful. So, bless me and us, those of us lacking in that absorption. Please bless us that we can be also absorbed like you, even at the, you're not that old, but still a little, older to us. So we also, when we come to your age, I'm already at the age, I'm already so forgetful, but but you remember everything, and may we also have that quality, Mataji. And as Mataji was saying, you are so soft-hearted. We can all feel that you're so emotional, Mataji, and you cry so easily, and that's such a wonderful quality of pure-hearted Vaishnava. So bless us with that also, Mataji. Sorry, I'm asking you instead of but anyway, wish you a very, very, very happy birthday, Mataji. I don't know what to speak. I did not write anything. But then very grateful for your association. Feel really blessed to be in Bhakti Sangha. And we have so many wonderful devotees, including yourself, Mataji. Though you're so sincere, you remain still so humble. And hope I can, develop that quality. And yes, Mataji, involve your daughters into everything. And, and when we are trying to do the PPT, you are working so hard you were working for your PPT for the presentation. And I was so amazed to see that, Mataji. Thank you so much, Mataji. And yeah, it was wonderful seeing you in Atlanta, meeting you, and you still remember. Thank you, Mataji. Hare Krishna, Dandavat Pranam, Mataji. Haribol. Hare Krishna, Anuradha Mataji, Radhika, Gopi, Koti Koti Dandavat Pranam to all of you. No, Mataji, I am not senior or not sincere, Mataji. Pray for me, begging, ये चोली फैला के भीख मांगते कि आप सबका एसोसिएशन मिले. And yes, Mataji, Drashti is now making Srila Prabhupada Amruta's PPT. She start to sit in a japa 6:35 to 7. That is also Srila Prabhupada mercy. Every day from last 3.5 years, we hear Mayapur Dham Aarti when we are walking. All credits to Bhakti Sangha, because nowadays they are work from home. So see here attentively morning class, sitting at least 4 or 5 japa, not more than that. And all credits go to Bhakti Sangha, all teachers.
Thank you very much for all your association. Radhika Gopi, H.G. Lalitangi, H.G. Prithvilasani, H.G. Kirtida Sundari Mataji, Vrinda's mother, Anuradha Gopi. Thank you very much. Pranam to all of you. May Shri Radha Kalachandji bless you in abundance, Mataji. I'll pray for you again in the temple, Mataji. Hare Krishna. Pray for the Drashti also. Hare Krishna, is there anybody having anything to go like that? So then they can go. Otherwise, Sukhasagari Mataji is the next in the line. Okay, Sukhasagari Mataji, go ahead, Mataji. Hare Krishna Mataji, Danvat Pranams. Wish you a very happy Krishna conscious birthday, Mataji. And it's always a pleasure to see your smiling face and your enthusiasm in the class. And especially your enthusiasm for bhajan and kirtan. It's so contagious. You like it so much, Mataji. And you also spread that same mood to others also, to be enthusiastic about kirtan. And also the way you sincerely take note. Oh, yeah. I think somebody is unmuted. Yeah, so you also sincerely take notes, Mataji, and that's also very inspiring, the kind of effort you put into listening to the class so sincerely and taking notes. And so many different qualities. Also the prasadam distribution you do, you post pictures of, so much prasadam that you keep distributing week in and week out. It's all inspiring, Mataji. Please continue to inspire us this way, and looking forward to more of your association. I know you gave a couple of classes in Hindi, and it's really nice to hear. So please do give more classes in Hindi also. Whenever you can, please give some classes in Hindi, Mataji. Thank you so much. Srila Prabhupada Leelamrita, Vrinda Gopika Mataji only. Yeah, maybe you could give Leelamrita class in Hindi. It would be nice, Mataji. Thank you so much, Mataji. Again, wishing you a wonderful day and a wonderful health and a spiritual life, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा जी, सुख सागरी माता जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप जो भजन सिखाते हैं माता जी, वो दिल से गाते हैं माता जी। हमारे लिए प्रे करना कि हम हृदय से वो गाए और सब वैष्णव को सिखाए माता जी। एंड यस माता जी, ऑल क्रेडिट्स गोस टू भक्ति संघा माता जी। देयर इज अ छोटी सी कीड़ी के पैर जितनी सेवा मिली है एच राधा गोविंद महाराज के, दैट इज एच लाल गोविंद प्रभु जी कथा माता जी। पर ये सब क्रेडिट भक्ति संघा को जाती है, क्योंकि वो सब वैष्णव का एकदम अटेंटिवली हियरिंग एंड मेकिंग नोट्स। ऑल क्रेडिट्स गोस टू भक्ति संघा, ऑल माता जी, ऑल टीचर्स, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम सुखेश्वरी माता जी। हमें बस आपकी प्रेयर में रखना और दृष्टि को भी आपकी प्रेयर में, दृष्टि शिवानी को रखना। हरि हरि गौरांगा। माता जी, थैंक यू सो मच। माता जी, आज पहली बार आपने मेरा नाम सही लिया, सुख सागरी, फिर बाद में बदल भी दिया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सुख सागरी माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हैप्पी बर्थडे अगेन। थैंक यू माता जी। और गोश्रील प्रभुपाद श्री गुरुदेव गोपीनाथ की जय। हरे कृष्णा माता। Who wants to go next? Kirtida Mataji. Kirtida Mataji. Okay. Riti Mataji, you're working from home? Okay. Everybody is working, Mataji. Yeah, no problem. I can actually do Sham Rupani Mataji. I can go last because I'm collecting points for Vrinda Gopika. Okay, then I will go, Mataji. Nobody is talking, so I will take opportunity to go. Hare Krishna, Vrinda Gopika Mataji. Happy Krishna conscious birthday. Thank you so much, Mataji. And before I started regularly joining to this Bhakti Sangha, before that itself, one day you have connected to me for Vrinda's videos. That's how we both became friends in the phone. I was thinking that you are a small girl when your voice being seen in the groups. That time Bhakti Sangha is open to send anyone anything. You used to share your audios. Can you be quiet, Vrinda, please, for a few minutes? Okay. So then you used to send your audios in the realization of the class. Then I used to hear that. I used to think this Vrinda Gopika means a small girl. I didn't know that Vrinda Gopika Mataji means so elderly Mataji. And then
And when Vrinda was going for surgery, I requested for the prayers. You posted in all Bhakti Sangha group, and everybody was writing message over there. We are praying for Vrinda. We are praying for Vrinda. It helped me a lot, Mataji. That time it was very hard for a mother to take a child, a 3-year-old girl, to a surgery. But when everybody in Bhakti Sangha were writing message that I am praying for this little girl, that time I felt that this group is so nice. I have to do something for this group. Then that made me, just involve into the group. Thank you so much, Mataji, for that is like really, because that's a big help. Prayers are like, we need, ultimately prayer is the one which is going to save us. So I'm very, very grateful to you for that, Mataji. And rest, always you take my name whenever there is something. Oh, Vrinda's mom. Thank you, Mataji, for always encouraging me all time. Thank you so much. Like you are so sweet. Even a small service somebody is doing, you will put it in a this what you call magnifying glass, and you see it as a very big thing, and you just glorify them. But you doing so much nicely, Mataji. You're joining everyday call. You share your realization, sit and write in this age. You're writing and you're trying to tell. Then when I take myself, I feel like I don't know how to read. I don't know how to write. I'm just bad. I'm just trucking over there itself. But when I see you, I get so much of encouragement. I should not stop. Look at Vrinda Gopika Mataji. She cannot even speak English properly, but she is doing it. Why not me can do it? It gives me so much of motivation when you try to write down each and every point and speak out. It is very helpful, Mataji. And not only that, I put you in my broadcast team for Guru Maharaj calls. You join every day. You hear otherwise, and you send me the back recording. See, I learned from Guru Maharaj today this one. I learned from Jaipatak Maharaj this one. When you send that audio, when I hear that, I really feel so inspired, Mataji, because so much touching. For every lecture, you have so much of things to share about what Guru Maharaj is sharing. It is so nice, Mataji. Thank you so much for that. And also, whenever you see that speaker is giving so nice class, and then you just you speak about speaker also very nicely, and you say that we cannot enter into the Vrindavan Dham, only because of you we are entering. And like it shows so much of love and affection for the speaker, and respect also, Mataji. Thank you so much, Mataji. And your tips in the Jagannath kitchen, you help people to understand what to eat, what not to eat, and how the way you cook in very large quantity. I am also the same. I come into your group. Whenever I cook, 3 people coming, no matter 10 people, otherwise getting out. So I mean, whenever I see you are cooking and serving, I feel, oh, Mataji is like me, only same. We both together, please live in one place. We can feed everybody. Very nice. Thank you, Mataji, for your sweet association. Thank you for encouraging me to lose my weight. Hope I follow your directions and lose my weight and become like you. Very sweet and young looking girl. I'm looking old, being so like this. So thank you, Mataji, for encouraging me and always instructing me according for my health, so that I be healthy. Thank you, Mataji, for your all love. Happy birthday. And as Radhika Kasturi Mataji said, I love you so much. Thank you, Mataji. You're like a mother for me. Happy birthday and lots of love to you, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा वृंदास मदर. मैं तो ये से ही बात करूंगी, वृंदास मदर. Yes, Mataji, I learn lots of like a quantity cooking from my mother, from my grandma, and from my papa and हमारे ससुर. तो ये माताजी वारसा में आया है माताजी. all credit goes to Srila Prabhupada, Srila Gurudev, Shri Radha Gopinath Mataji. Or yes, Mataji, I want to inform that Drashti also here at Jaipataka Maharaj every day before going bed 9 to 9:30. और जिस दिन हम नहीं सुन पाते तभी बताते कि माताजी from last 3 days not here Jaipataka Maharaj वाणी, पर दोनों मिलके सुनते हैं माताजी. तो
माता जी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम टू योर सिंसियर सेवा। आज सुबह भी जब हम उठे थे 4:30 तभी देखा तो आप सुबह में तभी तो 3:30 हुआ होगा इन टेक्सास। यू आर हियरिंग सिसी भागवतम क्लास। So Mataji, you all are inspiring, all Bhakti Sangha teacher are inspiring us. What should our mood to show Srila Prabhupada, Srila Gurudev, Shri Radha Gopinath. एक एक वैष्णवी के पास माता जी सीखना है। माता जी ये झोली में आपकी सब प्रेयर्स डालना और दृष्टि सिवानी आपके जितने बड़े डिवोटी बने। कोई जूनियर कोई सीनियर नहीं होता है वृंदा की मम्मा, बट ऑल द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव and determination of all the Bhakti Sangha teacher, whether it's Radhika Mataji, you, Sukeswari Mataji, Preeti Mataji, Lalitangi Mataji, Mataji Kirtida Sundari Mataji, they are the base, प्लिंथ है माता जी, और वो बेस इतना स्ट्रॉन्ग है और दे फॉलो द गुरु महाराज कि वो पीछे रहते हैं और आप सबको आगे करते हैं। दैट आई लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ यू माता जी। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम टू योर सिंसियर सेवा। श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव की जय, गोपीनाथ की जय। Thank you, Mataji, for all the love. Hare Krishna. और माफ करना, मैं आपको बताती हूँ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, दिस इज नॉट फॉर यू, दैट इज नॉट फॉर यू, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। माताजी कोई बात नहीं, माताजी आप भी मुझे माफ करना है। कभी कभी मैंने देखो कभी बोल दिया कि ये पोस्ट मत करो, वो पोस्ट मत करो, प्लीज माताजी मुझे माफ कर देना। मैं मतलब मैं जो भी बोल रहे हैं मैं अकेली नहीं है, वो फिर पीछे बहुत है, तो माताजी प्लीज मुझे माफ कर देना प्लीज, कि मैं आपकी बेटी है ना, तो माफ कर देना प्लीज। माँ कभी भी बेटी को माफ करती है ना माताजी, प्लीज माफ कर देना। थैंक यू। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, ऐसे नहीं बोलते। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। वृंदा बेटा, you want to say happy birthday? Say one. Happy birthday, Mataji. हैप्पी कृष्णा का थैंक यू बेटा। वृंदा, छोटी सी वृंदा से भी हम लेसन सीखते हैं माता जी कि कितना डिटर्मिनेशन है। यस, देयर इज अ गिफ्ट टू हियर कृष्ण कथा कृष्णा एंड बाय हार्ट ऑल द श्लोका, पर उसके पीछे उसकी माँ और पापा का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। पूरा दिन वो लोग कृष्णा कॉन्शियस देते हैं। तो थैंक यू बेटा वृंदा फॉर गिविंग योर एसोसिएशन, स्पेशली नरसिंह कवचा एंड ऑल श्री भागवत गीता श्लोका। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम बेटा। श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव, श्री राधा गोपीनाथ, सावर स्पेशल मर्सी अपॉन यू एंड योर पेरेंट्स। पेरेंट्स की बहुत मेहनत होती है बच्चे को आगे लाने के लिए। बस आपके जैसे मेरे दृष्टि सिवानी भक्ति में आगे आगे आए जाए इतनी प्रार्थना करना। वृंदा की मम्मा, हरे कृष्णा। डेफिनेटली माता जी, आपकी दोनों बेटियां भी अच्छा से कृष्ण भावना में मतलब क्या बोलती है, वो लोग डिवोशन में ज्यादा आने के लिए मैं डेफिनेटली प्रे करती है माता जी। I really pray for their both devotional service, Mataji, that because how you are doing, definitely it will go to the children, definitely Mataji. I'll definitely pray for them, and they will be Mataji, because they are seeing you, right? All the day you are fully engaged in Krishna consciousness. So definitely they will become fully in Krishna consciousness. Yes. Mataji, please pray for me that I learn 18 chapters in Bhagavad Gita. Yes, every day pray for you Vrinda beta. Hari Hari Gauranga, Koti Koti Danvat Pranam beta. You can learn in 3 days, don't worry. Thank you Mataji. Hare Krishna. So who wants to go next? Kitida Mataji, are you there? I know you have other services in temple, that's why I'm calling your name. Okay, maybe Shamarupini Mataji. Shamarupini Mataji, would you like to go? Okay, I'll go. Okay, Mataji. Hare Krishna, Vrinda Gopika Mataji, Jai Jai Gauranga, Jai Jai Nityananda, Jai Ho! Jai Srila Prabhupada, Gopinath ki Jai. Your presence is very touched to my heart, Mataji. Thank you so much for everything that you do. I have a long standing nice relationship with you. I'm very honored. Thank you so much, Mataji. Back in Atlanta, my Atlanta days with you, they were very, very beautiful. Sometimes, you know, when great Vaishnavas are amidst us, we take them for granted. We are thinking, oh yeah,
this person is in my own temple, my city, so we don't give them the importance that they deserve. So I felt that, oftentimes all of us, not just me, everyone in Atlanta would just take such a great Vaishnavi for granted. We just took it for granted when we were there and when we are there. But we keep forgetting that a great personality is amidst us. So that's the first realization I've had after so many years whenever I see you. No, Mataji. And I learned a lot even in Atlanta days. Your enthusiasm has been the same so many years. It's not that your enthusiasm suddenly kicked in at one point, but I have been seeing the same enthusiasm since Atlanta days. You were so you heartfelt in whatever you did. Whatever you did it from your heart. Whichever program you attended, you did it from your heart. You would hate to miss any single Bhakti Vriksha or gathering. And if your health or if your travel did not permit you to attend a Bhakti Vriksha or a home gathering or even the temple programs, because you were very regular at the temple too. So because of traveling issues, like you didn't have someone to drop you, or there were some practical issues, and if you at all you had to miss, I remember how much you would repent for it, how much you would repent for it. You would feel so bad that you didn't do it, and you would keep asking so many people, can you drop me off, and can you pick me up? I really want to come to the temple. So that just shows how much you have very simple heart, Mataji, very, very simple heart, no complication. Your desire and bhakti is also very genuine and very simple. Um, and you glorify people from the bottom of your heart, and that is a great quality that a lot of us in Bhakti Sangha have taken from you. This heartfelt glorification, because it's so important, and you really appreciate. You just don't glorify because, oh, it's my duty to now switch on my video and glorify. It's not like that. You really do it from the bottom of your heart, and you appreciate every speaker's endeavor. And as everyone said, you love bhajans. Bhajans is your favorite, and you really appreciate anyone who comes up with bhajans. And every single point a speaker says, you take down notes and you make sure that you repeat it, you ponder over it, you implement it. So you have such wonderful, wonderful qualities, Mataji. Even the same enthusiasm as you show on the Zoom calls, when I used to see you in person, you when the energy around you is so high, and it really rubs on to the person who's next to you. So that's so amazing. I remember back in 2015 or something, actually, it was a very heart-wrenching time for everyone. Your name was up on the initiation list, and then last minute, we don't know what happened, your name was missing. And you were sitting there completely shattered and you didn't know what to do. I'll never forget those moments in my life. And I was feeling so bad. I didn't know what to do. I was just looking at you, and I didn't even have the guts to come forward and talk to you at that time. Like the rest of us who had the list kick, actually, when we thought ours was not on the list. But anyway, it so happened by luck we got it. And we were feeling so miserable that one of us from the Atlanta congregation did not get that year. But then I'm so glad that it turned out that very soon yours came out in a much better situation than all of us. Your name had come out at the following year, and you finally received the initiation from Guru Maharaj. One thing why I remember this incident so clearly is because your case is very different from the rest of us. You've been practicing Krishna consciousness since 1990 sometime, or from that 93. 93. And in India, it is very difficult to get initiated by Radhanath Maharaj simply because the wait time is 15 years plus. In America, it is less than 10 years, so it's a big advantage. Sometimes it's 5 years, sometimes it's 6 years, sometimes it's 10 years. And very rarely, if the person has a very good standing in the temple and the temple president and Maharaj are friends, then somehow by luck, maybe 2-3 years is a miracle. But in your case, you had been waiting for more than 15-20 years, and then you came to the US, and in the US you were trying. That too having the standing of being from Radha Gopinath temple, obviously your name should have topped the list. and in spite of all this, one by one, so many stumbling blocks. I remember those years, like 2014, there was a stumbling block, 15 like this.
just for you to get initiated after 18 years was such a struggle. And it almost came up to the point where everything was done, but the name was missing on the list. I'll never forget that. And we were feeling so guilty without any qualification. We were sitting there, and you were definitely much more qualified than anyone else in that hall, in that entire room. And I'm so glad the very next year the things were cleared out, and your name had come, and finally you got received initiation. And I remember the happiness that you had when you got your initiated name. And it's a big thing, Mataji. For some people, definitely this is a big step. And it was such a, all of us were so happy, actually. Everybody who heard that finally, after one by one, these blocks got cleared off, and after almost an 18-19 year wait, you got initiated. Such a big deal it was. We were all like, finally, 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 and everyone was so happy because everyone was trying their best. The temple president was trying his best. The counselors were trying their best, but something kept happening. I don't even know what. I never bothered to ask what it was. But anyway, but I'm so glad that today all these things are gone, and here we have our mother Vrinda Gopika Mataji, who's an epitome of so much compassion and mercy to each one of us, who's been the mother of everyone, and who just pours out her love like like an open tap. So they say bhakti should be uninterrupted, and it should be unmotivated. Just like flowing oil, like you have flowing water, you have flowing oil. There is a difference. When water flows, the water flow is not very smooth generally. That's because the water is not very viscous. But when oil is flowing, it's like clear flow. So like that, you have that from your heart. You have a clear flow of love towards everybody in your heart, and that just comes out every time we interact with you. The few things that everyone mentioned, which I'd like to repeat, is of course your love for bhajans, and how I remember before Leela Amrita, we started off this pre-bhajan session, and that was just to honor you, honestly. That was just for Vrinda Gopika Mataji because she loves bhajan so much. And then, of course, now it continues it used to continue on the Wednesday classes. And then now, of course, Sagri Mataji has also taken up shloka classes, which you're a big fan of. So for you, bhajan, shloka recital, all this mean a lot to you. And we are happy that someone here in this congregation is having that love to pursue it in different times and situations. So thank you for that. And yeah, everyone talks about your heartfelt glorification, and of course your family members too. You have so much drive to make everyone get involved in Krishna consciousness, and you play the recordings and the live classes loud so that everyone in the house is inspired. So these things in turn, they are inspiring us, Mataji. They are really, really inspiring us. Thank you so much for everything that you have done, and you have to really, and you are one of, and of course Jagannath Kitchen. You have a large heart, and you have a large hand, and you love to cook, and I've tasted your cooking, and it's so amazing. Yes, I still remember once in one of the houses, it was a program with over 100 devotees, and it was a big Chapan Bhog festival, and I was seeing like the intensity with which you were serving, like you were cutting so many vegetables in one end, you were making those, I'll never forget that gram flour laddus, besan something I'll never forget in my life. And you were cooking so much there, and I was like, everyone was busy, everyone was in their own world, they were not really bothered, but you were literally running the show that day. And you were telling, oh, finally, oh, Jagannath likes, after like more than 100 items were cooked, you came and you said, Yari, Jagannath likes sweet rice. Someone quickly make sweet rice. Let's make now when the festival is about to start, what sweet rice are we going to make? But then you made sure that no, Jagannath likes it, so we have to make it. And then I was like, oh my God, no, from the beginning, everything is started. But anyhow, by the time we set up the buffet and everything was done, by the time the Aarati started, you finished making this rice. So that was so amazing. And even at that time, though you cooked so many items, and though you were actually the star of the show, you just tasted a simple raita. I remember this so clearly. It was a simple raita with just some cut vegetables, some grated carrots, some cucumbers,
That's all. Nothing great about it. I mean, like everyone makes raita, right? You ate that raita and you were glorifying that raita for 15 minutes. And I was like, what's wrong with Mataji? So much grand cooking that she does. She has the time and the heart to glorify a simple raita. You were speaking like that is the best nectar you've ever tasted in your life. Like, this is amazing. This is simplicity of heart and genuine glorification. So thank you for that. You are amazing and you are a role model for many of us as to how to keep our Vaishnava relationships. So continue to be so, Mataji, and continue to bless us and continue to consider us as your own, as you always. We love you a lot, and yeah, we keep making offenses. Like, we are always doing something wrong, where we end up screwing up something, and then we realize, oops, we shouldn't have done this like this, and Mataji's upset. But we pray, and we pray to you itself that you may bless us so that we don't do many more offenses like this. Thank you, Mataji. Hare Krishna ji, Prithvilasani, koti dandavat pranam, Srila Prabhupada, Srila Gurudev ki jai, Gopinath ki jai. Prithvilasani, you are so special for all the Atlanta. You and Prabhuji both are. Jagannath Das Prabhuji, when first time, there is a festival, and I told Jagannath Das Prabhu, and he is so happy. Before I end my talk, I have to talk about Prabhu. Because it is not complete without Prabhu's talk, especially about something about you. Before you end up talking about Prabhu, I wanted to first say. So we all have this Nrsinga Devka. What is this? This is like the thread. Oh, Radhesh, Gopinath ki jai. This one, so when they do an Ashrama Yajna, this thread is given to everyone who participates. And this thread was given back in 2013 or 14, I don't remember. Yes, 13, Mataji. 13. It was an Nrsinga Yajna that happened in the Atlanta temple, and the thread was given to everyone. Vrinda Gopika Mataji in 2013, she was going around giving this thread to everyone, and she was tying to whoever was next to her. My Prabhu was next to her, and she just took my Prabhu's hand and she started tying the thread. And my Prabhu was quite surprised because, generally he's the person who's always at the back. Nobody even notes him. Nobody even exists. So many people, they are like, yeah, Preeti Mataji, she's there everywhere. Everyone knows her. But Jagannath Prabhu, nobody knows who he is also. Backside director. Yeah, he's always, he never even comes in the hall also. He's somewhere in the corner, like not seeing people. And Vrinda Gopika Mataji somehow caught him and she tied the thread to him. And I want to tell everybody, even till the date he passed away, till that date, he refused to take out that thread. He refused to take out that thread only for one reason. Vrinda Gopika Mataji tied it. That's all. Not Nrsinga Yajna, nothing. He didn't have any attachment to any of that. He just said, Vrinda Gopika Mataji has tied it. Don't cut it. Don't remove it. And be like, it's so old. He would tape it, it would, of course, it's a thread, right? It won't stay for 7-8 years. 2020, it's not going to stay till 2020. But it would come off. Like, this thread is less than a year old and it's almost going. So I'm going to remove it anytime. But Prabhu, he didn't remove it. He would tape it. He would take sellotape. He would take tape. He would tape it. And then 5-6 times he's made me retie it, again re-sellotape it, and again retie it. And he would keep that forever. And he said he'll never remove it in his entire life. And he really didn't. Even after he went also, he didn't remove it. Meaning, like, till he was Right. And Adhikata Prabhu also mentioned this finally during his last rites, that Prabhu had that thread on. I said, yes, he had the thread on purely for Vrinda Gopika Mataji. He had so much affection for you. And I remember you would send us messages for his health, like how you sent to Vinita Mataji. And I would read out those messages to Prabhu and tell him, Mataji is asking you to do this. Mataji is asking you to do that. He'll be like, he really took it very seriously, Mataji. You believe it or not? He took it so seriously that he would hit the gym every day for 1 hour. And the last 1.5 years, he did that very seriously, because he had so much love for you. Actually, I don't have that much, honestly, but my Prabhu had a lot of love for you. That's the truth. Now you can talk, Mataji. Thanks for reminding me. I forgot to talk about my Prabhu. Thank you. Mataji, you both are doing
so many service, like a father and mother of all the South Indian newcomer Vaishnava. वृषभानु प्रभु जी is given a seva to serve the Vaishnava. हमने हमेशा देखा है कि पूरे राउंड में बिठाते थे आप सब वैष्णव को और कृष्ण कथा कृष्ण कथा कृष्ण कथा कहते थे. और about जगन्नाथ प्रभु, he is a backside director माता जी. He sit in a one corner and doing some seva. पर वो and मतलब वो फ्रंट में नहीं आते थे और हमने देखा था उनको एग्जैक्टली लाइक साधु संघा सेवा दैट पूरा टीम वर्क बना दिया था. और फिर जैसे ही श्री जन्माष्टमी फेस्टिवल इट्स गोइंग टू लेट 12:30 और 1 o'clock, so they make 200 plates and he guide all the Vaishnava, but he is backside director like our Ji Vrishabhanu Prabhu. And Mataji, about initiation, there is a rules by H.H. Radhanath Maharaj and H.H. Gopal Krishna Maharaj that without the permission of husband, if they are not signed the letter of initiation, Gopinath, Shri Radha Gopinath is not given initiation, and it's not easy. Yes, Mataji, more than 172 counselor are watching us, that we are attending श्री भागवत गीता श्री भागवतम क्लास. और वो टाइम हमें याद है कि हम तो जा भी नहीं पाते थे क्लास में. तो 8 years तक किशोरी माता जी हमारे घर आते थे माता जी, और वो श्री भागवत गीता की क्लास लेते थे. और हियरिंग दैट कृष्ण कथा कृष्ण कथा कृष्ण कथा, मेरे ससुर बैक टू गॉडेड 100% एकादशी के दिन गए, क्योंकि वो भी हेल्प करते थे. मेरी सेवा थी कुक प्रसादम. एवरी वेदर इट्स अ ड्रामा फेस्टिवल और वेदर इट्स अ श्री भागवत गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड हु विल सपोर्ट मी? My father-in-law, he's 78 years old. We both cook prasadam, and niche there is a restriction not to go after 7 o'clock outside. तो नीचे ही हम खड़े रहते थे और वहां से स्टेशन से 3 मिनट दूर रहते थे, वहां से सब वैष्णव प्रसाद लेके जाते थे. तो माता जी, all credits goes to senior Vaishnavas blessing माता जी. And वो लास्ट में एच.जी. राम प्रभु जी ने एंड एच.जी. सीता प्रिया माता जी ने वो साइन किए पेपर्स. एंड नाउ माय प्रभु जी इज डूइंग सो मेनी सेवा बाय जगन्नाथ मर्सी. दृष्टि also doing so many seva. I try to engage in a cooking because I can cook prasadam but not explain so nicely in the English. So Drashti said, Mama, I will explain. That is the mercy of all Bhakti Sangha teachers, Mataji. Ananta Koti Dandavat Pranam to each and every Vaishnava that now Drashti said, Ma, last week only, after 1.5 years, I attend the morning Shri Bhagavad, Shri Shringar Aarti. After complete Shringar Aarti and Srila Gurudev Puja, Srila Prabhupada Puja, Guru Maharaj Puja, Ajji Ghanshyam Prabhu, he is a Brahma. I take only 1 minute. He is a Pujari and he's cooking also. Ajji Ghanshyam Prabhu is from Mayapur Dham. Drashti is given a promise to Ajji Ghanshyam Prabhu that every week one morning आरती I will come for 2-3 months और उसके बाद हम आफ्टरनून प्रोग्राम में आएंगे. तो she got a special blessing of Mayapur Dham Vasi Pujari. So she said, Ma, आप 6-7 साल तक दूसरे के साथ जाते थे because we have only one car. Now I buy a big car for you that हम 6-7 वैष्णव को लेके मंदिर जाएंगे, पर 3-4 महीना रुक जाओ. हम एवरी संडे मॉर्निंग में लेके जाएंगे, आफ्टरनून में नाउ अवर टर्न दैट वी टेक दोज हु आर नॉट एबल टू कम टेम्पल बिकॉज ऑफ राइड. तो हम लेके जाएंगे सब वैष्णव को. तो ये सब कृपा भक्ति संघ के लेक्चर सुनते 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 सब भक्ति संघ के टीचर को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम. प्रीति विलासिनी, you are the main pillar. Kirtida Sundari Mataji, you and Lalitangi Mataji, and the 4th pillar is all Bhakti Sangha teacher. कि आप पीछे रहते हो और अपनी सब राधिका गोपी and ये इंदुलेखा गोपी सबको आगे लाते हो. This is the quality. These things we learn from Guru Maharaj, that we have to sit backside like our Jagannath Das Prabhu, backside director, and we give an opportunity to new Vaishnava. That thing I learned from you, Ajji Kirtida Sundari Mataji, Ajji Lalitangi Mataji, our Vrinda's mother, Akshita's mother, all Bhakti Sangha's Radhika Mataji, all newcomer teachers, not newcomer, maybe
बरसों कितने सालों से उनकी भक्ति, दे आर छोटे हैं भक्ति में, हमारे हमसे भी छोटे, पर हमसे भी 100 गुना आगे है भक्ति में। ये हमने सीखा है ऑल भक्ति संघ टीचर से। और वो 2 साल से लेक्चर सुनते सुनते आज वो खुद बोली कि माँ तुझे कुकिंग का बहुत शौक है, आई विल एक्सप्लेन एंड यू विल कुक फॉर भक्ति संघ। एंड हम नहीं आ सकते 2 क्लास से इवनिंग क्लास में, क्योंकि एच लाल गोविंद प्रभु जी की एच राधा गोविंद महाराज जो वृंदावन धाम से है, उनकी सेवा है। पर हम जरूर अभी महीने में 12 मतलब 13-14 दिन होती है, बाकी के दिन हम जरूर इवनिंग क्लास में भी आएंगे। तो थोड़े सेल्फिश है कि खुद के लिए तो खुद का तो प्योरिफिकेशन, पर दृष्टि शिवानी का भी प्योरिफिकेशन के लिए कोटि कोटि दंडवत प्रणाम टू योर सिंसियर सेवा। आपने बहुत प्रेयर की है और आपने बहुत, और भक्ति संघ वृक्ष प्रभु जी ने बोला था कहीं आप मंदिर जाओ, कहीं भक्ति संघ वृक्ष में जाओ, क्योंकि वो डायमंड बिजनेस में करते थे तो वो 6-7 दिन बाहर रहते थे। तो बोलते कि आप 2 बेटियां का ध्यान कैसे रखेंगे। तो ऐसी जानवा माता जी जो बहुत सीनियर वैष्णवा है, तो उनको हमने फोन किया तो बोला नहीं माता जी, योर फर्स्ट ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ योर 2 किड्स, क्योंकि वो 6-7 दिन टूर में रहते थे। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम बेटा, प्लीज फॉरगिव मी इफ आई मेड एनी मिस्टेक। अनंत कोटि दंडवत प्रणाम टू योर लोटस फीट। श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव की जय, गोपीनाथ की जय, प्लीज विलासिनी गोपी की जय। कोटि कोटि दंडवत माता जी। Yeah, someone can go ahead next. Please forgive me, I take more 5 minutes, please forgive me. Hare Hare Krishna. Krishna. Okay, Padmasakhi Mataji, please go ahead, Mataji. Hare Krishna, Vrinda Gopika Mataji, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada and Guru Maharaj. Mataji, wish you a very, very happy Krishna consciousness birthday. I am sure I think I am the last or before last. So many Mataji spoke a lot about you. So what to say about you, Mataji? Very, very motherly. Mataji is very emotional, always encouraging everybody. She sends me also so many messages, giving a lot of information about so many classes. And anytime I give a small class or kids class, she encourages me. She always prays. And whoever sees Vrinda Gopika Mataji, I think will definitely nobody will forget her because of her simplicity and very motherly. She connects with everybody, each and everybody. Like she acknowledges everybody's work, and she's very, very simple, very, very humble. Though she is very, very serious and sincere, still she talks as if she doesn't know anything. And I somehow like that kind. Like Mataji is very homely. The way she cooks, her plate is like so. The plate also reflects the way she arranges, the way she cooks. It's so perfect, very neat. And anytime we are seeing her in the class, she's always in the kitchen, either cutting. so much of seva in kitchen. So much of seva in kitchen. And Mataji joins even kids class. It surprises me. And even Ekadashi chanting, Mataji, she now I think Mataji got busy, but she used to join midnight till morning. She used to be there before. So everywhere Mataji, she has lot of that thirst and desire to for Krishna devotees. Actually, she really appreciates devotees a lot. And I think that shows so much. Like usually those who are from Radha Gopinath temple, she has lot of love towards Radha Gopinath, the deities, all like very, very, every walk and talk of hers, I admire is her simplicity. So Mataji, please pray and bless that I will also get that simple heart and simple nature, that simplicity, Mataji. That is the one thing, I think the most best thing that attracts everybody, even Krishna and Guru Maharaj. Simple heart. Thank you, Mataji, for everything. I wish and pray that you will have many, many more happy, healthy birthdays, encouraging all of us and showering your love and blessings to all of us, Mataji. Hope to see you sometime personally and directly, Mataji. Hare Krishna. Edina Krishna. Say happy birthday to Mataji. Balram, Say happy Balram.
Say happy birthday. Happy birthday, Mataji. Thank you, Balram beta. Dandavat pranam. Thank you. Is Hare Dina Krishna. Dina Krishna. Dina Krishna. Hare Krishna. Dandavat pranam beta. Thank you. Thank you, Mataji. Thank you, Padma Sakhi Gopi, Koti Koti Dandavat pranam. Srila Prabhupada, Srila Gurudev ki jai, Shri Radha Gopinath ki jai. All credits goes to Six Goswami, our Guru Parampara, Guru Maharaj, and Srila Prabhupada. और all credits goes to Shri Radha Gopinath Senior Vaishnav. कुछ नहीं माता जी, जो भी सीनियर वैष्णव से सीखा है वो ही शेयर करते हैं माता जी. एंड स्पेशली आप जो श्रीधाम वृंदावन धाम लेके जाते थे तो दृष्टि शिवानी सब लोग वो डाइनिंग टेबल पे आ जाते थे. स्पेशली वो रात को 2:30 बजे तक आप मेहनत करके नोट्स बनाते थे श्रीधाम वृंदावन धाम की. और पापा हमेशा हर साल श्रीधाम वृंदावन धाम लेके जाते थे हमें. तो यू रिमेमोराइज माय पापा. एंड वो एक वो पापा एक जो श्रीधाम वृंदावन धाम की पीली पोखर, देन दैट जो श्रीमती श्री राधा रानी है वहां पे अष्ट सखी के सब गांव, एंड नंद गांव, एंड श्री गोविंद घाट, श्री श्याम कुंड, श्री राधा कुंड, श्री गोवर्धन, पूरी छोटी छोटी जो आप बताते थे माता जी, वो सब पापा ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के मुझे और मेरे, हम वल्लभाचार्य बहुत फॉलो करते थे श्री लड्डू गोपाल को, तो वो पापा की आप याद दिलाते थे कि वो शाम को बैठ के कृष्ण कथा कृष्ण गांव में बदली, वो क्लास 1 ऑफिसर थे पर गांव में रहते थे, तो रोज शाम को कृष्ण कथा हमारे घर में होती थी, और स्पेशली श्रीधाम वृंदावन धाम की लीला. तो आप श्रीधाम वृंदावन धाम लेके गए, नॉट ओनली मी, माय प्रभु एंड माय 2 daughters. कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम टू यू ऑल लिटिल स्वीट. यस माता जी, कुकिंग तो वारसा में मिला है, पर एंड सिंगिंग आल्सो पापा के पास सीखा है, पर preaching is very hard for me, माता जी. Please pray for me that जैसे भी आता है गांधी कबली भाषा में, हम श्रील प्रभुपाद के मैसेज, आज तो बहुत हिम्मत आ गई क्या गौरंगी माता जी का सुन के, कि जैसे भी आता है दिल से श्रील प्रभुपाद का मैसेज शेयर करना है. कोटि कोटि दंडवत प्रणाम बेटा. श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव कीजिए. अपनी माँ के लिए प्रे करना कि ये मटेरियल हेल्थ साथ दे और लास्ट ब्रीथ तक वैष्णव के लिए कुकिंग करे. श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय, गोपीनाथ की जय. थैंक यू बेटा. हरे कृष्णा. Mataji, I just want to talk about your class. You did do a very nice class on Bali Maharaj and that pastime, Vaman Dev pastime. So that was unforgettable. You really spoke so well, Mataji, from your heart. It was one of the best classes, I'd heard about about Vaman Dev's appearance. Thank you for that, Mataji. Just wanted to tell that. I forgot to tell that. Hare Krishna. All mercy of Srila Prabhupada, Srila Gurudev, Shri Radha Gopinath. Mataji, ये जीवा पे सीता रानी, राधा रानी और अवर हनुमान जी ने अवर गुरु परंपरा बैठते, हम कुछ नहीं बोल पाते, उनकी मर्जी से बोल पाते. हमारे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता. और आप लोग, आप सबके सामने तो मैं नर्सरी की छोटी सी स्टूडेंट, पता नहीं कैसे आप समझ पाते हैं मेरा छोटा सा भाव और सिंपल लैंग्वेज में कृष्ण कथा. I don't know what to tell Mataji. Mataji is churning our hearts. माताजी सिंपल बातें जल्दी जल्दी दिमाग में और मन में जाती है. माताजी बड़े बड़े बातें जाने में टाइम लगती है, सबको नहीं जाती है, मेरी जैसे लोगों को सिंपल बातें जाती है अंदर. थैंक यू माताजी आपकी बढ़िया क्लास के लिए, और मैं वेट कर रही है आपकी फ्राइडे क्लास के लिए. थैंक यू माताजी. Finally Mataji is there, but I have Vrinda Mataji and Shamarupini Mataji. After that you can go, Mataji. I'm so sorry. Please go ahead, Mataji. Kitna Mataji, you can go, Mataji. You want me to go? Yeah, I'm telling Vrinda Mataji and Shamarupini Mataji can wait little bit. I was asking them. Oh, okay. Go. माताजी सिर्फ कृष्ण कथा सुनाना और कुछ मत सुनाना. कृष्ण कथा ही सुनाऊंगी और माता जी. श्री भागवतम, श्री चैतन्य भागवतम से सुनाना. बिल्कुल माता जी. आपको पता है ना भागवतम क्या है? क्या है माता जी भागवतम? भागवतम क्या सिर्फ कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन है? नहीं ना, भागवतम में डिवोटीज की ग्लोरिफिकेशन है, राइट?
सो अगर हम भक्तों की गुण गाते हैं, हम भक्तों की महिमा गाते हैं, तो वो भी तो एक भागवत कथा ही है, राइट? उसमें भागवतम में लिखा है ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवतम सेवया, राइट? वो भागवत क्या है? वो बुक भागवत और पर्सन भागवत। तो आज मैं बुक भागवत नहीं, आज मैं पर्सन भागवत के बारे में बोल श्रील प्रभुपाद माता जी, हम नहीं क्वालिफाइड है। प्रभुपाद भागवत में श्रील प्रभुपाद एंड ऑल सीनियर वैष्णव। और प्रभुपाद के भक्त भी तो प्रभुपाद के जो अनुगत्य में चलते हैं वो भी बुक भागवत, वो भी पर्सन भागवत है ना, वो भी तो एक भागवत ही है। तो आज मैं आपके बारे में बोलूंगी आपकी परमिशन से। ठीक है? तो सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। सच में आज मैं भगवान से ये प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान आपको अच्छी सेहत प्रदान करे, भक्ति प्रदान करे, और आपका हृदय जैसा है ना, बस वो वैसा ही कोमल हृदय ही रहे हमेशा। और अपने कोमल हृदय से जैसे आप भक्तों के गुणगान करते हैं, जैसे आप भक्तों की सेवा में लीन रहते हैं, आप हमेशा उसी तरह नित्य सेवा में रहें। मुझे तो लगता है कि आपकी जो कुकिंग सेवा है वो शायद आपकी नित्य सेवा है। पता नहीं, मैं आपका शायद स्वरूप जान गई हूँ। लेकिन आप नित्य सेवा करती हैं कुकिंग की, भोग बनाने की। तो मुझे लगता है कि आप राधा रानी के शरण में रह के हमेशा कृष्णा को ऐसे ही भोग प्रदान करें और उनकी सेवा में लगी रहें। तो माता जी, रियली आई एम सो ब्लेस्ड, बहुत ज्यादा हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें आपका संग मिला, और आप जैसी भक्तन का संग मिला जो कि हमेशा हमेशा दूसरों को उत्साह प्रदान करती हैं। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हैं, आप अपने बारे में बहुत कम सोचती हैं। आपको लगता है कि बस सब कृष्णमय हो जाएं, राइट? क्योंकि आप खुद कृष्णमय हैं, इसलिए आपको लगता है कि सब कृष्णमय रहें। तो आपकी ये जो है ना, आपका जो ये नेचर है, आपका जो ये प्रभाव है, ये मुझे बहुत इंस्पायर करता है। मुझे भी लगता है कि काश मैं भी थोड़ा सा वृंदा गोपिका माता जी जैसी बन जाऊं, कि मैं भी वो नोट्स लिखना शुरू कर दूं। मैं भी जब भी कोई क्लास सुनूं, मैं भी नोट्स लिखूं, मैं भी उसको अच्छे से ग्रहण करूं। बट आते जाते सुनते ऐसे ही निकल जाता है टाइम, बिल्कुल भी नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं रहता। बट आपसे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है माता जी, और जिस भाव से आपका जो भाव जगन्नाथ के लिए है, कि जगन्नाथ के लिए आप इतना अच्छा अच्छा भोग बनाती हैं, तो पता नहीं मेरा कब वो सौभाग्य होगा कि जब मैं आपके हाथ का बना हुआ खाऊंगी। मेरे को वो सौभाग्य अभी तक तो नहीं मिला है, और पता नहीं इस जन्म में कब मिलेगा। बट इच्छा बहुत है कि आपके हाथ का कुछ अच्छा खाऊं, बहुत बहुत मन करता है इस चीज के लिए। और हाँ, मैं वो दिन तो बिल्कुल भी नहीं भूल पाऊंगी जब मैं आपसे इन पर्सन मिली थी साधु संगा में। साधु संगा में आप सुबह सुबह मेरे पास आई और आपने सिर्फ इतना ही बोला कि आप कीर्तिदा सुंदरी हैं। तो मैंने कहा हाँ, और फिर मैंने तो नहीं पहचाना आपको, लेकिन फिर आपने कहा कि आप वृंदा गोपिका हैं और ऐसे ऐसे आप भक्ति संगा में आती हैं। तो मैं उस टाइम सच में भाव विभोर हो उठी, और आप मुझे देख के रोने लग गई। और मुझे लगा कि इनको क्या हुआ, कि ये रो क्यों रही हैं मुझे देखकर। तो मुझे मुझे बिल्कुल उस टाइम तो लगा ही नहीं, मुझे लगा कि मुझ में ऐसा क्या है जो ये ऐसे मुझे देख के रो रही हैं। लेकिन आज मैं समझ सकती हूँ माता जी कि आपका प्यार इतना है ना भगवान के भक्तों की तरफ, कि मैं तो उस भक्त की श्रेणी में भी नहीं आती हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे वो इज्जत, वो प्यार दिया कि मेरे को देख के आप रोने लगी। तो मैं वो ही सोचती हूँ, पता नहीं मेरे को कब वो रोना आएगा किसी भक्त को देख के, वो रोना मुझे क्यों नहीं आता है। तो माता जी, आपका हृदय सुकोमल है, आप बहुत ज्यादा कंपैशनेट हैं आप डिवोटीज के लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप अपना ही ये सुकोमल हृदय से मेरे लिए हमेशा प्रार्थना करते रहिए, कि मैं भी भगवान के चरणों में हमेशा लगी रहूं, उनकी सेवा में लगी रहूं, उनके संग में लगी रहूं, भक्तों के संग में लगी रहूं, और भक्तों को देख के वो खुशी के आंसू मेरे भी बहें। मुझे भी लगे कि भक्त का संग कितना कितना ज्यादा कठिन है मिलना, और जब मिले तो हम उसको रियली वैल्यू करें, हम उसको समझें। तो प्लीज माता जी, आज आपका बहुत ही ज्यादा शुभ दिन है, और आपके इस शुभ दिन पे मैं तो आपको कुछ नहीं दे सकती। मैं आपसे उम्र में, आपसे
भक्ति में सबसे बहुत छोटी हूँ, तो बस आज के दिन आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगी, लेकिन आपसे आशीर्वाद की कामना करूंगी कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भी आप ही की तरह थोड़ा सा सुकोमल हृदय हो मेरा, मैं कठोर वचन किसी से ना बोलूं और हमेशा भक्तों के संग में रहूं, कृष्ण की सेवा में लगी रहूं और भक्तों के को देख के मेरे दिल में भी वो भाव उठे जो भाव आपके मन में उठता है। तो माता जी आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत हार्दिक दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आपका एसोसिएशन मिला, आपका संग मिला इस भक्ति संघ के द्वारा। सो थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत, कोटि कोटि दंडवत टू यू माता जी। हरि बोल। आपका हिंदी सुन के मुझे रोंगटे खड़े हुआ। शुद्ध हिंदी, सुपर हिंदी, ऑसम। मेरा बहुत मन था माता जी को हिंदी में विश करने का। अरे बहुत श्योर माता जी, मेरे लिए प्रे करना और मुझे आशीर्वाद देना माता जी कि मुझे ऐसा ही संतों और भक्तों के संग मिले, भक्ति संघ का, और ऐसे ही भक्ति में थोड़ी सी जो कीड़ी के पैर जितनी भी सेवा करते रहे माता जी। बस पापा से, नाना नानी से यही संस्कार में सीखा है माता जी। आप मेरे लिए प्रे करना। कोई भक्ति में सीनियर जूनियर नहीं होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, पर आप मुझसे भक्ति में 100 गुना आगे हैं। तो मैं वो टाइम भी अपनी बात को दोहरा वो कर रही हैं, काट रही हैं आप अपनी बात को। अभी आपने बोला भक्ति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और अभी आप कह रही हैं भक्ति में मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ। बस नहीं ऐसे माता जी, उस आप टाइम अपनी भी बात को काट रही हैं माता जी, ऐसे नहीं चलेगा। भक्ति छोटा बड़ा होता है माता जी, ये तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृता में भी रूप गोस्वामी ने बोला है कि कनिष्ठ अधिकारी भी होता है, मध्यम अधिकारी भी होता है और उत्तम अधिकारी भी होता है। तो हम अपने आचार्यों की बात को कैसे झुटला सकते हैं? हम तो नहीं कर सकते ना। तो भक्ति में होते हैं माता जी, श्रेणियां होती हैं भक्ति में, राइट। लेकिन आप उत्तम अधिकारी के स्तर पर हैं। नहीं, सही में माता जी, सही में आप मुझसे उम्र में भी बड़ी हैं, आप इस लाइन में आने पर भी आप मुझसे बहुत बड़ी हैं। सो माता जी भक्ति में तो आप ही बड़ी हैं, इसी मैं प्रार्थना जरूर करूंगी, लेकिन आशीर्वाद आप ही से चाहूंगी। नहीं माता जी, ऐसा कुछ नहीं होता है माता जी। मुझे एक बात आपको बतानी है कि 10 साल 7 दिन जॉब करते थे माता जी, पर पिछले 4 साल जो अभी तो 1.5 साल से दोनों बच्चों ने मना किया है, पर भक्ति संघ श्री प्रभुपाद ने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में वॉलंटरी हम लोग सेवा करते थे, श्री भागवत गीता रीड करने की। तो श्री प्रभुपाद ने ऐसी जॉब दी कि पहले तो डंकिन डोनेट था, हमने प्रे किया कि हमें यहाँ नहीं आना, बोस्टन से यहाँ आए। तो माता जी उन्होंने भक्ति संघा में डाला और जॉब ऐसी दी माता जी, टेकिंग केयर ऑफ सीनियर सिटीजन। तो उनकी सेवा करके, उनको कसरत कराते, खाना खिलाते, वॉशरूम लेके जाते। हम 10 साढ़े 8 बजे से लेके मतलब 8 o'clock स्टार्ट होता था, तो श्री भागवतम, श्री भागवत गीता भी सुनते थे, और 10 to 11 हरे कृष्ण महामंत्र बोल नहीं पाते थे क्योंकि म्यूट पे रखना होता है, कैमरा इज वॉचिंग अस। एंड हमारा जो पेशेंट है वो भी सुनते थे। और माता जी, यू बिलीव और नॉट बिलीव, जो माता जी मणि बहन थे वो, तो जो श्रीमती मणि बहन थे वो बोल नहीं सकते थे माता जी, वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, खाना है, वो हरि बोल बोलते थे। और वो प्योर गुजराती थे। श्री वल्लभाधीश और श्री लड्डू गोपाल की वर्शिप करते थे, पर वो भी 10 to 11 हरे कृष्णा महामंत्र सुनते थे। हरे राम हरे कृष्णा, कृष्णा प्योर नहीं बोल पाते थे, पर कृष्णा बोलते थे। और नॉट लेस देन 89 भजन। एक बार मैंने एक बुक लिया उनका, और वहां से गुजराती के भजन जो पापा से सीखे थे वो गाने लगी, सीसी यमुना महारानी की प्रार्थना और प्रेयर्स। तो वो उनको सब बाय हार्ट थे। तो उनकी जब डॉटर आई तभी हमने बताया, तो बोले कि मेरी मम्मा बहुत भक्ति करती थी, पर वो, आप बिलीव करें या ना करें, ये तुलसी महारानी गले में श्रीमती श्री राधा रानी है, पर वो भजन तुतक भाषा में बोल पाते थे मेरे साथ, पर ऐसे डांस करते थे माता जी। और हरे कृष्ण महामंत्र सुनते थे तो आंसू निकलते थे क्योंकि वो बोल नहीं पाते थे, पर मैंने उनको राधे राधे इतना सिखाया था माता जी। तो ऐसा भक्ति संघ का एसोसिएशन, भक्ति संघ के टीचर्स, ऑल सीनियर ब्रह्मचारी, ऑल भक्ति संघ के टीचर्स, आप सब
श्रील प्रभुपाद की मर्जी होएगी कि मैं काम करते करते भी आप सबकी कथा सुन पाती थी। वो टाइम तो रोना आता था क्योंकि आई कैन नॉट मेक अ नोट्स, क्योंकि राधानाथ महाराज ने बोला था, एच जयपताका महाराज, सब चंद्रमौली महाराज आते थे, उनकी वाणी में एक ही था कि जो भी काम करे वो गुरु महाराज और श्री श्री जगन्नाथ की सेवा करते ऐसे करे। तो वो टाइम तो मैं नोट्स नहीं बना सकती थी, पर कृष्णा की मर्जी से माता जी पिछले 1.5 साल से विश्वरूप प्रभु जी ने बताया था कि यू हैव टू मेक नोट्स। तो मेरी दोनों बच्ची और मेरे हस्बैंड बोलते हैं जैसे तू बना रही 11, 12, 10 ग्रेड में पढ़ाई कर रही है, ऐसे एक बाजू कुकिंग हो रहा है, एक बाजू नोट्स हो रही है। तो माता जी ऑल क्रेडिट्स गोज टू श्री श्री राधा गोपीनाथ सीनियर वैष्णवास इंस्ट्रक्शन माता जी। और वो जो सीखा है उन वो सब सीनियर वैष्णवों से वो ही सब थाली में परोसते हैं माता जी। थैंक यू माता जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बस प्रार्थना करना कि ऐसे ही भक्ति संघ का संग मिला रहे और हम सिंसियरली सब संतों और भक्तों की सेवा करते रहे, और ये सर हमेशा संतों और भक्तों की शरण में नमा रहे। बस इतनी हमारे लिए आज के दिन प्रार्थना करना। और ये मटेरियल बॉडी जो है, किशोरी माता जी ने बताया था कि वो मंदिर है, तो मंदिर को क्लीन रखना है। तो आप इतना प्रेयर करना कि बस हम 20-25 मिनट से ज्यादा तो बैठ नहीं पाते एक कॉर्नर में, पर सिंसियरली आप सबकी कथा सुनते रहे, और जो भी सेवा मिले वो सिंसियरली करे। बस इतनी आज के दिन प्रार्थना करना है जी। कीर्तिदा सुंदरी माता जी, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव जी की जय, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कुछ सेवा में गलती रह गई है तो हमें माफ करना। हरे कृष्ण माता जी। कुछ गलती नहीं है, बस मैं एक ही आखिरी बात जरूर बोलूंगी, मैं किसी का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, कि एक बात मुझे आपके में बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं मुझ में तो वो आदत नहीं है, हम तो सीधा नाम लेते हैं, लेकिन आप हमेशा उसके आगे एक प्रीफिक्स लगाती हैं, एच जी या एच एच, इज होलीनेस। तो ये प्रीफिक्स लगाना भी, जैसे उस दिन आदि गदाधर प्रभु बता रहे थे कि हमें श्रीला, महाशय ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो आप लगाती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू माता जी। और शायद मैं भी किसी दिन वो प्रीफिक्स लगाना शुरू कर दूं और भक्तों को थोड़ा सा आदर सम्मान देना शुरू कर दूं। प्लीज। माता जी। हरे कृष्णा माता जी, एंजॉय योर हरे बर्थ। कृष्णा। और दृष्टि ने प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट ईयर वो टेक्सास लेके आएगी आप सबको मिलने के लिए। नेक्स्ट ईयर नॉर्थ कैरोलिना में है माता जी, टेक्सास में देन तो ड्राइव करके मैं, दृष्टि, शिवानी तीनों आएंगे। करके आइए। चलिए, अच्छा, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्लीज फॉरगिव मी फॉर टेकिंग मोर टाइम। धन्यवाद प्रणाम। टुडे इज योर डे। Next. Hare Krishna Mataji. Hare Please Vrinda accept my Gopika. humble obeisances. All Gurus to Srila Prabhupada and Gurudev. Wish you a very, very happy Krishna conscious birthday, Mataji. There is so much to talk about you. You are a mother of Bhakti Sangha. Like we have one mother is Kamadaki Mataji and another one is you. And I always like to talk to you on phone, and I relished that time. I remember when we talked first time, it didn't feel like we were talking for the first time. We immediately connected, right? And from that time we have that strong connection. And I really pray that it goes on forever. And I'm really, really happy that I'm connected to someone who has a pure and innocent heart. You're also a mother of a Jagannath group. Because your prasadam is so tempting. I really wish I get to taste your prasadam soon. And I really want to get myself trained from you to make such yummy prasadam. Yeah, and I know you always tell me that I should post the pictures, but I somehow I don't get time. I just forget, but I will try to do that for you, Mataji. And I remember you used to also join bhajan classes along with the kids. Yeah, that shows that how innocent you are at heart. You used to say that I like to join classes with the kids. Yeah, that's and
Also, Mataji, you're so sincere. Sincerely, you're joining classes every time, starting from the morning japa call. You're always there in all the calls. That sincerity is one quality I really would like to imbibe in me from you. And yeah, that you're always encouraging everyone, always praising everyone. Even if I'm doing some small seva, you're always appreciating it. It's so nice to have someone like that in life. And thank you for all those messages and videos you're sharing of those healthy recipes. And it's like you are requesting me that please make it for you and for your Prabhu and Akshita. 1 second, sorry. Thank you so much for that, Mataji. And I really wish today that I meet you soon and take your valuable association. That would be my very, very happy day. And I sincerely pray at the lotus feet of Shri Shri Radha Madhav that you may they give you always good health, and may they always engage you in the service of Shri Shri Guru and Gauranga. Thank you so much, Mataji, for your association. Hare Krishna. Thank you, Vrinda beta. Koti koti dandavat pranam. Srila Prabhupada, Srila Gurudev ki jai, Gopinath ki jai. You and Vivek Prabhu both are inspiring us, Mataji. कि मतलब क्या हो सेवा का मूड, मतलब देखते हैं हम कि वो आप नए वैष्णव को घर में इकट्ठा करते हैं और प्रसादम बनाते हैं. विवेक प्रभु सैटरडे संडे 3:44 हाजिर होते जपा के लिए, और रीडिंग कितना होता है माताजी. तो एक एक वैष्णव के पास सीखना होता है माताजी. स्पेशली उस दिन हमने वीडियो बंद कर दिया था, आपने सिखाया था करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम बालमुकुदम मनसा स्मरामि जिह्वेपि बस्वामृतमेव देव गोविंद दामोदर माधवेति. चालू ही रहेगा वो. तो 45 श्लोक में से पापा ने 28 श्लोक सिखाया था, तो वो आपने वापस रिमेम्बर है किया. तो वो मामा यहाँ थे लास्ट स्टेज पे, तो वो तभी भी वो दृष्टि शिवानी उनके पास सुनते थे. और जब शिवानी अभी बहुत इमोशनल हो जाती है कि डिग्री लिया और तुरंत ही उनको रोज 8-10 जन को भगवतधाम जाते हुए देखना पड़ता है, तो सुबह 6 बजे ऐसे गोदी में सो जाए, मम्मा वो गोविंद दामोदर माधवे थी. तो आपने वापस रिमेम्बर कराया और शिशि भागवतम क्लास आप लेते हैं. मैं थोड़ा हिंदी मतलब थोड़ी सेवा एच राधा गोविंद महाराज ने दिया है तो आ नहीं पाती, उसके लिए सच्चे हृदय से माफी चाहती हूँ. पर आपने इंस्पायर किया. और छोटे बच्चे माताजी, ये तो उसमें तो बहुत प्योर सॉल होते हैं, कुछ अलग ही उनके साथ बैठ के भजन कीर्तन सुनने का अलग ही मतलब भाव आता है. पर वो इंटरनेट के प्रॉब्लम से अभी कथा लाल गोविंद प्रभु की 7:30 to 11 o'clock हो गई, तो इंडिया का मॉर्निंग टाइम होता है, उसकी वजह से मैच नहीं होता है. बहुत कुछ खाना है स्पिरिचुअली, पर खा नहीं पाते हैं माताजी. यहाँ से भी लेना है, यहाँ से भी खुद का मानना है, पर नहीं हो सकता है. पर बहुत आनंद होता है माताजी, कॉन्शियसली कि इनकॉन्शियसली हमारे बच्चे ये सब भक्ति संघ के क्लास मॉर्निंग से लेके शाम तक, और स्पेशली आप एंड वो अंजना गोपी, एजी अंजना गोपी, वो कितनी मेहनत करते हैं. मेरे लिए वो हार्ड होता है श्लोका दैट गोविंद नमामि पुरुषम तमहम भजामि, आगे का सब याद करना, बुक्स खोलनी पड़ती है. पर बच्चे तुरंत ही तीसरे चौथी बार में तो बाय हार्ट कर लेते हैं. तो मैं दृष्टि को बोलती हूँ, मैं जो देख कैसी डपोडेस्ट इंसान हूँ, मुझे याद नहीं रहता है, बुक खोलनी पड़ती है. तो वो प्योर, जब वैष्णव प्योर होते हैं तो वो प्योरिटी उनके स्टूडेंट में आती है. आप करते हो, और फिर एजी ललितांगी माता जी या एजी आई फॉरगॉट अंजना गोपी, कितना हार्ड श्लोक मैंने संडे को सीखा है. और तभी तो जॉब भी रहती थी और घर पे भी रहते थे, तो दृष्टि और शिवानी भी इनको से सुनते थे. और प्रभु जी ऐसे बुक न्यूज़पेपर ऐसे, then दृष्टि से डैड न्यूज़पेपर इज दिस साइड, यू आर लाइक रॉन्ग साइड. वो ऐसे पकड़ते उल्टा साइड. सो कॉन्शियसली और इनकॉन्शियसली भक्ति संघ के सब टीचर्स को लाख लाख शुक्रिया, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम की. उनकी वजह से हमारे घर में आहे तो भक्ति 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 आ गई. बच्चे लोग 12th स्टैंडर्ड तक तो सब कुछ फॉलो करते थे, बट आफ्टर कमिंग ईयर
क्योंकि शिवानी दृष्टि दोनों जॉब करते थे फ्राइडे सैटरडे वॉट एवर इट इज, पर दे अगेन स्टार्टेड जपा, दे अगेन स्टार्टेड टू हियर शिशी भागवतम। रात को 11 बजे तक सुनते हैं कृष्ण कथा, कृष्ण कथा, कृष्ण कथा। और क्रेडिट्स गोस टू भक्ति संघास ऑल टीचर। दंडवत प्रणाम वृंदा बेटा, श्रील प्रभुपाद श्रील Thank you, गुरुदेव की जय, Mataji. गोपीनाथ की जय। Dandat pranam to you, Mataji. आज And मैंने सबका बहुत टाइम लिया, सच्चे हृदय से माफी चाहते हैं। no, Mataji, no, it's fine, and it's your day. And you should bless us all, Mataji. Like I'm doing like this. Please, you bless us. Please, Mataji. Have a nice day, Mataji, and yeah, Hare Krishna. बस प्रार्थना करना कि आपका जो मूड है वही मूड से हम बच्चों का क्लास लेने की है जिम्मेदारी, पर अभी तो क्वालिफाइड नहीं है। मे बी इट इज इन हिंदी इंडिया के टाइम में, तो आप वो ही मूड आए, श्रील प्रभुपाद सिक्स गोस्वामी और गुरु परंपरा का आशीर्वाद मिले और एज इट इज हम कर पाए, इतनी हमारे लिए प्रार्थना करना। बिल्कुल कीड़े के पैर जितना भी क्वालिफिकेशन नहीं है, पर प्रार्थना करना कि हम कर पाए वो सेवा। You also pray for us, Mataji, for all of us. I'm so grateful for your association. Hare Krishna, Mataji. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव गोपीनाथ की जय। Hare Krishna. Hare Krishna, Vrinda Gopika Mataji. A very, very happy Krishna conscious birthday to you. I'm so sorry. I came running upstairs because I had to turn off the cooker. So I was like, okay, before my turn comes, let me just turn it up and I'll come up. So I was running. I'm so sorry. Yeah, so it was so good to hear from everybody about you. And especially Kirtada Sundari Mataji's glorification and Preeti Vilasini Mataji's glorification. It really touched my heart. And I have met you in Bhakti Sangha, I have met you in Sadhu Sangha, but I don't remember. I'm not sure if you remember me. That time, I don't know, Jayashree Mataji from Yes. Knox, he was also there. We three were standing and we were talking. I'm not sure if you remember me then, but you had told so much about Bhakti Sangha at that time. I think it was almost 5 years back. So many things you had told. And I was so surprised. And it was also very good to hear because you were so involved, and now I can see all those things because at that time I did not know you much, but now I can see in everything that you do, like starting from the chanting in the morning, hearing classes, attending all the classes. You are so told. Where else you're not even present here physically. That's how I feel. So, like Prabhupada says, right, purity is the force. So I can see in you the purity that you have, the purity with which you do all the things, whatever service that you take up. And like everybody said, now I'm also part of Jagan Shadam, the opulent Prashadam, I should say. It's not just, a normal, but it's very, very opulent that you take interest in doing everything, and the way, for everybody, you're always encouraging everybody. I see that, and you have so much respect. Like Kirtada Sundari Mataji was saying, it's so much respect. There's not too much respect, and it's always loving Mataji. Oh, Mataji, is my voice breaking? You cannot hear? Vinita Mataji, is my voice breaking? Yeah, Mataji. Can you off your video and speak, Mataji? If you off your video and speak, it will be good, maybe. So now does it work properly? It's still breaking, Mataji. Oh, I think I have internet. My internet is weak, Mataji. Yeah, I don't know. Is it better? Now it is better. Go ahead, Mataji. So, Vrinda Gopika Mataji, I was telling, also one thing is, I have been living in Gujarat for many years. I have been living in Gujarat for many years. Even my parents live there. So I have lived in different parts of India. So, but when I came to Gujarat, I saw how people, they're so loving.
you don't have to be somebody, some of their friends to know. And they're very accommodating. And then now I see, you are a Gujarati, but on the top of that, so you are a devotee. So what to speak of your love? You're very, 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 accommodating, very loving. So that quality is always inherent in you. The way I have seen, I've interacted with other people. So, so when you're devotee, it's just takes on to the next level, Mataji. So I'm really, really fortunate, how, like everybody said, you are just like a mother, very, very loving, very caring, always giving. That's what I feel. You're always giving and not taking anything for yourself. That's what I see whenever you're speaking. It's always like, take, like give, let me give, and you're always giving the other person, and you're asking the other person to take it, but nothing for yourself, Mataji. That's so selfless. So all the qualities of a devotee, we can just see in you, So it's very, very wonderful, Mataji, very wonderful. I just hope sometime soon I can come to Atlanta, because when I was coming to Atlanta, I never met you, I met you only at Sadhu Sangha, but I never got the opportunity to see you and meet you there. But now I hope, one day when I come back to Atlanta, I can surely meet you, Mataji. I really hope. Hare Krishna, Mataji. Have a very, very blessed and wonderful Krishna conscious birthday, Mataji. Thank you, Ji Rukmani Gopi. Dandvat pranam to your sincere seva. कितनी अच्छी तरह आप अपने लड्डू गोपाल, अरे आपके बेटे और आपकी जो गोपी है, दोनों को कृष्णा कॉन्शियस देते हो, क्लास लेते हो। माता जी, आप सबसे सीखा है कि व्हाट्सएवर मोड टू सी साले प्रभुपाद श्री गुरुदेव श्री चरणा गोपीनाथ 10 साल पीछे चले गए। 10 साल 7 दिन काम था, पर जी वृषभानु प्रभु ने बोला था कि शाम को सब्जी बना दो, आटा शाम को गूंद दो, पर you have to complete minimum 11 rounds in the morning and उसके बाद जॉब स्टार्ट करना है। तो बस प्रार्थना करना कि अभी तो दोनों बेटी ने मना किया कि काम नहीं करना है, तो बस प्रार्थना करना कि आप लोग जो मूड से सेवा कर रहे हो, इसका कीड़ी के पैर जितना मेरे में क्वालिटी आए। और जो भी सीनियर महाराज से सेवा दी गई है, भले ही राधानाथ महाराज से दीक्षा लिए, पर गोपीनाथ में सब महाराज है, जय पताका महाराज, एच भक्तिचारू महाराज, एच बीबी गोविंद महाराज, एच गोपाल कृष्ण महाराज, सब महाराज आते थे। और सब महाराज से जो थोड़ा थोड़ा सीखा है, वही वर्ड टू वर्ड हम दे पाए। बस इतना प्रेयर करना। बस रुक्मणी, श्यामा रुक्मणी गोपी सुनाए हमने 8-10 क्लास आपके, और जब भी मन विचलित हो जाता है दोपहर में, तो वो स्टार्ट कर देते बच्चों का क्लास, क्योंकि इसमें इतना अपनापन होता है और सीखना मिलता है। जो आप सिखाते हैं श्लोका, तो उनके साथ हम भी बैठ जाते। और दृष्टि ने उसकी बेडरूम में नहीं रखा है उसका ऑफिस टेबल, उन्होंने जगन्नाथ बलराम, श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा रानी के साथ में, और उसको भी बच्चे बहुत पसंद है। घर के बाजू में श्री श्याम कुंड, श्री राधा कुंड, श्रीमती श्री यमुना महारानी है, वहां जाके भी कृष्ण कथा सुनते हैं। तो वहां पे भी आपका क्लास सुना है। तो आपको मतलब कभी कभी हमें होता है कि ये हम इतने ही बच्चों के लिए क्लास, नो 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 नो, इंटरनेट पे में भी लाखों वैष्णव आपके क्लास सुन रहे होते। वृंदा की मम्मी के क्लास सुन रहे होगे, इंदुलेखा माता जी के क्लास सुन रहे होगे जी, वृंदा गोपी अक्षितास मदर के क्लास सुन रहे होगे। तो बस ऐसे ही सेवा करते रहे और हमारे लिए भी प्रार्थना करें। एक ही सेवा आती है, कुकिंग। 17-18 घंटा होएगा तो कुकिंग करेगी, अभी तो उसके लिए भी चैन लेना पड़ता है। पर आप एक ही प्रार्थना करना कि बस ये सर संतों और भक्तों की सेवा में लगा रहे, और ऐसा ही वैष्णव का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन मिले, और अभी कभी भी जॉब नहीं करनी पड़े, ताकि कृष्ण कथा सुने। और श्रील प्रभुपाद का जो भी सेवा है वर्ड टू वर्ड सबको दे, उनकी मर्जी से, श्रील प्रभुपाद श्री गुरुदेव गोपीनाथ की मर्जी से। थैंक यू बेटा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Mataji, I need to take your blessings, Mataji. I am not at all qualified to, pray or do anything for you, Mataji. But really, Mataji, you are an inspiration to everybody, Mataji, whether you believe it or not. But you don't have to go ahead and preach, because of the way you are, the way you talk, and the way you show your love to everybody. Mataji, that is
more than enough. That is what people want, you know. They don't want that you have to just go out and preach and talk, but the way you behave with others, that's what motivates them to even come to Krishna consciousness. So Mataji, thank you so much, Mataji. Thank you. Hare Thank you, Aji Sham Rukmani Danvat Pranam. Hare Krishna. All Guru Srila Prabhupada, Srila Gurudev, Shri Radha Gopinath. Hare. Mataji, tell her name, Mataji. Sham Rukmini. Mataji, Sham Rukmini, right? Shyama Rukmani. Sham Rupini. Shyam Rupini, Rupini. Rupini, please forgive Yeah. me. Shyama Rupini Yeah, Mataji. I know you always say Sham Rukmini. I know that because there is one more Mataji in New Jersey. Even she's a disciple of His Holiness Indradumna Maharaj. Even she calls me Sham Rukmini. So I don't know. Even she's Shyam Gujarati. So Rukmini. I start thinking everybody's saying Sham Rukmini. Please forgive me. Shyam Rupini. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Danvat Pranam. Mataji, I think next is Radhika Mataji can go. सबको मैंने खाए पिए बिना बिठा दिया है. आप भी हरे तो नहीं कृष्णा। खाए ना माताजी हमारे साथ. Hare Krishna, Vrinda Gopika Mataji, Dandvat Pranam. Wish you a very, Not very able happy to see Krishna. Radhika Gopi. Okay, I'm sorry. Wish you a very, very happy Krishna consciousness birthday, Mataji. Mataji, what to talk about you by listening everybody's. It was nothing. I have anything to talk. So you are very inspiring, Mataji. You, as everyone was saying, you attend every each and everything, inspiring us in all the way. Even like so many misses, like we missed every day, like cooking, but you all the day you cook and you post in the Jagannath and encourage each of us. We are so thankful for that, Mataji. Lot to learn from you. Please bless us, Mataji. And you also encourage like our kids to join that classes, these classes, and you send the links for us to join. Thank you for encouraging Anshu for joining the Vaishnava songs classes. So grateful for you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Radhika. how did you got so many pictures of Mataji? From where did you take it? I asked her only, Mataji, I just want some of your pics, so she has sent Oh, me. I want to. such a beautiful pictures, Mataji. You were looking so young and so nice in one dress. There is one, I think, blue or what chudidar you are wearing, and you look so young, so young in that. It's so Sadhu beautiful. Sangas picture. So Yeah. beautiful you are looking. I just told, actually, previously Before she have sent me so 4 years. many pics that time. So I have some of those pics and I asked Mataji, I just want some of your family pics. So she have sent me those yesterday. Thank you, Mataji. Such a beautiful pictures. Nice to see you in different age. You know, we can see Yeah, those yeah. different Yeah, age, their because kids' we have college already days and everything. Yeah. Last 4 years. very nice, Mataji. Nice to see you. That pictures are very beautiful. And even I was thinking like how you and your daughter look same, similar, just a copy. When you are young, you might have just been like our Mataji, like so beautiful. The one who looks like you is Drishti or Shivani? Who is that? Drashti, Shivani, the healthy one is Shivani and the thin one is Drashti. Both are very cute, Mataji. Very nice. Krishna's mercy. Even Shivani not eat first 9 years garlic onion, now start. Nice, Mataji. So how is your hand and everything, Mataji? Like last, it's Acha good. hai. Krishna's mercy. Okay, good. Krishna's mercy. Nice, Radhika Mataji, Ji Radhika Gopi Dandvat Pranam. Mataji, please give your association in a Bhakti Sangha Shri Jagannath plate, Mataji. Not seen your prasadam plate from last 1 month, Mataji. Please, एक बार जी सीता प्रीति माताजी ने बताया था कि माताजी कितने लोग इंस्पायर होते हैं प्रसादम प्लेट से, तो कभी भी हमें हमारी सेवा नहीं छोड़नी चाहिए. राधिका माता जी, we should not stop our सेवा. Please give your association your Shri Jagannath Prasadam plate
in a Shishi Jagannath kitchen, and you make a small without cooking, without you क्या बोलते without using gas. जो आपने रेसिपी Fireless सिखाई cooking, थी, Mataji. हाँ, Fireless. fireless cooking. So nowadays Ayurveda and homeopathic said we have to eat prasadam at least one time without cooking, जो उसके nutritious ना चले जाए. तो वो बहुत that is touch to heart, Radhika Gopi. You teach so many things in a kids class. So pray for my Drashti that she will come and do some Srila Prabhupada सेवा. हमने नहीं बताया, उन्होंने खुद ने बोला कि माँ मैं भी करूंगी सेवा. Srila Prabhupada, Srila Gurudev की जय, Radhika Gopi and Ansu Mata जी, she is a blessed Gopi माता जी. कभी कभी मुझे सीनियर याद दिलाते थे, इतने डफोडेस्टे के क्लास में जाते समय, फ्राइडे का क्लास, सैटरडे का क्लास है तो याद नहीं आता था इतनी सारी जिम्मेदारी में, क्योंकि गुजराती पीपल आर स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली, तो भागते भागते जाते थे क्लास में. तो वही रिमाइंडर सीनियर से सीखा है तो मैं आपको भेजती हूँ, क्योंकि अंशु भी बहुत बहुत सिंसियर है माता जी, बहुत सिंसियर है. तो वही रिमाइंडर, ऐसे ही सेवा करते रहे, इतनी प्रार्थना करना माता जी. राधिका माता जी, प्लीज शेयर योर प्रसादम प्लेट एंड प्लीज शेयर ऑल द न्यू रेसिपी. सबके पास नया नया सीखना मिलता है, तो प्लीज शेयर योर प्रसादम प्लेट फॉर न्यूकमर वैष्णवा. Yeah, sure, Mataji. Thank you so much for your And yes, I encouragement. have not seen from last 1 month in a Bhakti Sangha, जो आप सुबह में आ जाते हो और सबको वेलकम करते हो, like our Vrinda's mother, वो भी सेवा में नहीं देखा है. तो please come for that seva also, welcoming all Vaishnava and introducing Shila, all the senior brahmachari and Maharaj, and like Raj Prabhuji, you and Vrinda's mother are every day coming for a call, Shishi Bhagavatam class. हमने वो सेवा में भी नहीं देखा. Please come regularly for that seva also. Hare Krishna. Sure, Mataji, I'll try, Mataji. Thank you so much for encouraging. With beautiful sari, beautiful voice, and especially Mataji, morning japa. Shama Gauri Mataji, आप और हम और फिर दूसरे 4-5 वैष्णव, तो वो जो वाइब्रेशन होता है ना माता जी, गोपीनाथ में सब साथ में हमने जपा करते थे, तो वो वाइब्रेशन से, नहीं आज क्यों लेट हुआ, 5 क्यों बज गया, और आप सब 3:30-4 बजे आ जाते हो, तो बस वो बहुत अच्छा लगता है आपकी सेवा. हरी हरी बोल गौरांगा माता जी, प्लीज Mataji, आप तो वीडियो भी you come in video also, Mataji. That really inspires us, Mataji. खुद के लिए we मैं can't सोना do that. इसके Yeah, लिए. we can't do that, but yeah, खुद के लिए we वीडियो are चालू trying रखते that हैं at कि मैं least. सो ना जाऊं. Thank you, Mataji. Thank you, And Radhika today also, Gopi. like today morning, I think so, your daughter came and she want to wish you off the हाँ, video. We were और like, फिर वो I बैठ thought, like, जाती है okay, जपा let me में. see that. अभी स्टार्ट किया from last 4 week. 4 Nice, round, yeah. 6:30 to 7:10. So nice, और Mataji. You are कनिष्क उसको inspiring भक्ति संघ everybody. Like you used to say, I was doing this from past 20 years. I want my family to involved in this, and you made that, Mataji. You are so inspiring for us. नहीं, तो श्री राधा गोपीनाथ की मर्सी, श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव की मर्सी. मेरे प्रभु जी पूरा किचन हम छोड़ के जाते, वो बोलते आप जाओ मंदिर, और पूरा मतलब दोनों किचन प्लेटफॉर्म पर भरे होते और वो बर्तन घिसते हैं, तो मुझसे ज्यादा तो उनको पुण्य मिलेगा. तो दैट मच चेंजिंग. कभी कभी वो नहीं बैठते पर मुझे छोड़ने आते थे लास्ट में. तो all credits goes to Srila Prabhupada, Nice, Srila Mataji. Gurudev The और way Guru you Parampara. take care of Jagannath, he only showed the way for you and your By family, eating prasadam, Mataji. everybody changed, Mataji. By eating Yeah, Shri so Jagannath true. prasadam. Yeah. अरे वो फूल लेके आए जगन्नाथ के लिए. उस दिन मुझे याद है राधिका माता जी बिल्कुल ही हेल्थ साथ नहीं देता था, डायरिया एंड वॉमिटिंग, बट फिर खिचड़ी बनाया, सब्जी बनाई, फिर साबूदाना की खिचड़ी, एक प्रसादम बैठ के बनाया. तो ये सब वैष्णव की प्रेयर्स होती है माता जी. हम लोग में कुछ क्वालिफिकेशन नहीं होता है, वैष्णव की प्रेयर्स और गुरु परंपरा श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की प्रेयर्स से कर सकते हैं. दिस मटेरियल बॉडी समटाइम्स नॉट सपोर्टिंग, but all mercy of Srila Prabhupada, Srila Gurudev, Shri Radha Gopinath, and all Vaishnavas prayer, Mataji. Your sincere japa and prayers only, Mataji. You are inspiring us also. Thank you so much. All Bhakti Sangha teachers are inspiring me, Mataji.
ऑल भक्ति संघा टीचर, छोटे से कीड़ी के जहर सीखते वैष्णव है। अगर आप लोग नहीं होते, वीडियो खुद के लिए ऑन करते सेल्फिश इंसान, क्योंकि मैं ना सो जाऊं। बेसिकली वी आर डूइंग जपा विद जी आदि गदाधर प्रभु ऑल्सो, बट व्हाट हैपन, वन विल डूइंग जपा एंड एवरीबडी विल इन म्यूट। तो माता जी वो जपा में वो क्वालिटी नहीं आती, बी ऑनेस्ट। पर जब हम संघ में करते हैं तो एक दूसरे का हरे कृष्णा, अरे ये वृंदा की मम्मी का आवाज है, अरे ये श्यामा गौरी का आवाज है, अरे ये राधिका माता जी का, ये राधा माता जी का आवाज है, तो पता ये स्टीफनी माता जी का है। तो उससे एक हूफ मिलती है और वी कैन डू जपा मोर अटेंटिवली। Yes, Mataji, so true. Thank you, Mataji. Hope you have a wonderful, wonderful day. आप आज टेम्पल को जा रहे हैं माताजी? शाम को 6 बजे। अच्छा। अभी नहीं 6 बजे नहीं, 5:30 को दृष्टि ने प्रॉमिस किया है कि अभी एवरी संडे मंदिर वो खुद लेके जाएगी मॉर्निंग में, पर वो भीड़ से डरती है बिकॉज आई हैव 5 in my heart, so she promised that morning आरती we will go for 4-5 week and then in afternoon आरती। और वही सेवा जो तुझे सबने मतलब राइड दी है 6 साल तक, तो हम लोग भी बड़ी गाड़ी में सबको राइड, सबको लेके पिकअप करके मंदिर जाएंगे। तो ये भाव भी राधा गोपीनाथ श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की मर्जी से आया। राधा माता जी सच में हमने तो सोचा भी नहीं था कि दृष्टि शिवानी हमें लेके जाते थे रेगुलर मंदिर में, कभी कभी वैष्णव नहीं मिलते थे, पर एवरी संडे उन्होंने जी घनश्याम दास प्रभु जी जो मायापुर धाम के पुजारी, उनको प्रॉमिस किया कि मैं माँ को लेके आऊंगी। दैट इज ऑल्सो मर्सी ऑफ श्री राधा मदन मोहन। So nice, Mataji. Thank you for sharing so many things, Mataji. So nice to know. हम किसी का हार्ट को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव श्री राधा गोपीनाथ एमसीसी जगन्नाथ बलराम सुभद्रानी की मर्सी से ही होता है। हम नहीं दे सकते किसी को भी भक्ति। पर स्पेशली श्रील प्रभुपाद अमृता सुनने के बाद बहुत माता जी बहुत चेंज आया, माता जी बहुत इन माई सेल्फ माता जी। Nice, Mataji. और दृष्टि ने वो ऑर्डर भी किया, पर आते आते शायद 10-12 दिन लग जाएंगे। Smile, Mataji. Today is your day. Thank you, Mataji. Thank you, Vinita Mataji, for giving me this opportunity. Radhika Mataji, for Radharani Mataji for coming on the call and wishing, even though you are busy schedule, and beautiful video. It was so nice. Thank you, Mataji. Thank you so much. Thank you. So we have Indulekha Karuna Mataji to go. Please, Mataji, go ahead, Mataji. Oh Krishna, I take lots of Hare time. Krishna Mataji, Dandavat Pranam. नहीं देखा, हरि बोल, धन्यवाद। Mataji. श्री प्रभुपाद श्री गुरुदेव की जय, गोपीनाथ की जय। It's Mataji's birthday. Hare Krishna Mataji, happy Krishna conscious birthday. Wish you a Thank you, very beta. happy birthday and a very wonderful Krishna conscious day. May Thank you you, never beta. take another birth again. Hare Krishna Mataji. हरि बोल, जय श्री प्रभुपाद। Thank you, beta. I forgot your name. Please forgive me now. Write down. That's okay, Mataji. His name is Prana. प्रणव, हरि बोल, दंडवत प्रणाम, श्री प्रभुपाद श्री गुरुदेव की जय, श्री राधा गोपीनाथ की जय। हमने देखा है you are attending class so sincerely, प्रणव, and I hope your mama make a pizza for you. We take that time. Yeah. You want to say it? Okay, yeah. Hare Krishna Mataji, wish you a very, very happy Krishna conscious birthday, Mataji. I hope it's been a very blissful day for you. For you, attending Bhakti Sangha class itself is very blissful, Mataji. Actually the first time I
noticed Mataji on the call itself was in the very, very beginning, because you will always unmute, you will always thank the speaker after the class, and the way you thank the speaker is so different, Mataji. You're so ecstatic at the end of the class, you're so full of your mood, you're always in tears at the end. I would also wonder, oh my God, Mataji has heard something and experienced something so much different from what I understood. So the class, I mean, the way I understood the class and the way you understood it is so very different, Mataji. You're always in that mood of entering Sridham and Vrindavan Dham, and you're always thinking about that, Mataji. So every class, how dedicated, like either in the class we can see either you are taking down notes very sincerely, or you will be cooking and listening very attentively. So this is what you always do. You make sure you're on video. You always honor the speaker so nicely, Mataji. So much to learn from you. Like proper Vaishnava etiquette we learn from you, Mataji. And so thank you so much for that. And you're so loving, Mataji. You're so loving to everyone in the group, whether you know them, whether they have been with you for a long time or it's the first time, it doesn't matter. You always encourage everybody, Mataji. And I'm so grateful to be a recipient of your encouragement, because without all of your mercy, without Bhakti Sangha, there is no way in which I could progress, because there is no association here. But I never feel that, because you all keep me through the day, going through the day, and you will always keep me motivated. So very, very nice. I'm so happy that Mataji, you're there for us. You're like a very loving mother. Every day you have so many offerings for your Jagannath, Baldev, Subhadra Mai, and it's such a wonderful plate every day. Only thing is, Mataji, some items I don't even know, but I am so scared. Okay, if I ask Mataji, it is so hard. I know you will have so much difficulty to type the recipe, but still you will send, long recipes, and then again you will send either video or audio instruction. Yeah, so much love, Mataji. We are so fortunate. We are so very blessed to be in your association, Mataji. So thank you so much for that. Mataji, you always call us, this is Indu Gopi, that is Vinita Gopi, this is Vrinda Gopi. Everyone you will call Gopi so sweetly, right? But Maharaj, he has blessed you and he has given your name directly as Vrinda Gopika, Mataji. You are already a Gopi. So sweet, Mataji. So that's just very nice that you're already in that mood, and you're always in the mood of Vrindavan Dham. So something for us to also learn, Mataji. One more thing that I wanted to ask is, please, Mataji. Oh yeah, I wanted to tell you about a Hindi class, Mataji. Wow. Next week, I don't know, Mataji, are you going to do Leelamrita in Hindi or English? No, because Leelamrita in Hindi, but the notes are in English, because we don't have a material for Hindi. Trustee already bought order, but it came 17 or 18 in Srila Prabhupada Amrita. So it is mixture Hindi and English. So word to word is Srila Prabhupada Amrita, and then explain in Hindi. That Hindi notes is given by Vrinda's mother. So Drashti is given a copy of this Hindi and English also. So learning both Hindi and English. So that is one thing, Mataji, your preparation for that, even last time's class, my God, it was for Vaman Dwadashi, I remember. Vamanadev pastime, that class was so amazing, Mataji. You say you don't want to preach, you're not a preacher, but I don't know how you can say that. You are such a natural preacher. Even when you are sharing points in the class also, that is a preaching, Mataji, and you share it, and you have so many wonderful realizations. That day's class was so full of realizations. Only the limitation for me was that, okay, my Hindi is limited. I cannot understand everything. And that is all that was there. But otherwise, for the Hindi speaking community, it would have been such a wonderful experience.
But as far as I understood, it was so beautiful, Mataji. And your preparation for it. I remember how you say, like, 1 week, 2 weeks back itself, you're done with the preparation. You have been practicing for the class for so many days. You've been meditating on it for so many days. So another thing for us to learn, Mataji. So, you're from every mother, we learn something. And from you, we learned so many good qualities, so many Vaishnava qualities, Mataji. Thank you so much. Please bless us, Mataji. Please bless us. Today is your special day. And please bless us that we may at least enter into devotee association properly. We learn to behave properly. Learn to get the mercy of Sri Guru and Gauranga Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Jai Indulekha Karunamai Mataji. Jayapataka Maharaj is given a right name, Indulekha Karuna Mataji. Yes, Mataji, we talk very less, but I know, Mataji, you are the backside director of so many Matajis. आपके साथ बात करके, talking with you, maybe they feel so happy. छोटी बात आपके साथ शेयर करते होगे माताजी. पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि there is वो करुणामय मतलब मर्सी निकल रही है आपसे. I remember that you are backside director like our Jagannath Das Prabhu. That first class of Sisi Bhagavatam. That who is this Gopi that always is making all the electronics things on the spot. Shishi Bhagavatam, my daughter also said like this on Shishi Bhagavatam, this verse is that verse is ye तुरंत ही निकाल के देते हैं. And then one time you given a first class of Shishi Bhagavatam Mataji, and then it's going on like a senior brahmachari. So this is the mercy of our Gurudev Mataji. I know that one time you explained about before taking initiation, H.G. Lalitangi Mataji told, read Sisi Bhagavatam first canto. So how sincerely you take the instruction of senior Vaishnava. And all the PPT actually I don't know the meaning of PPT also. Don't know the meaning of PPT. Then that Rukmani, Shama Rupani Mataji explain Mataji. How can you don't know all that things? But trust me, I don't know anything about the technical things of the poem Mataji. But how sincerely you find out that verses, and that we can see that brahmachari's face, eyes, Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Charna, Chaitanya Prabhuji, all the senior brahmachari of Radha Gopinath Maharaj, to see that verses on this spot. Abhi wo soch rahe the aur verses aa jata hai. And please request from bottom of the heart that I have seen that you are so nicely making prasadam plate for Jayapataka Maharaj. So please continue your seva in Shishi Jagannath Kitchen. Requesting all Bhakti Sangha teachers that please give your association to Bhakti Sangha teacher, Bhakti Shishi Jagannath Kitchen, because so many Matajis don't know how to make that prasadam. जब वो हमें पर्सनली इनबॉक्स में आके बताए माताजी स्प्राउट मूव कैसे करना है, एंड देन आई एक्सप्लेन इन English, tutti frutti English में, then that Mataji said, Mataji, I am also Gujarati, Resma Mataji from London, and every time she asks, come in my inbox, and ये कैसे आ केवी રીતે બનાવવાનું છે, આ કેવી રીતે બનાવવાનું છે. So this is the mood of newcomer Vaishnava, that please give your association to Shishi Jagannath Kitchen also, जो हम अब अच्छी तरह से शिशी श्री गुरुदेव को प्रसाद संडे में लाते हैं आप, श्यामा रूपानी, ऑल वैष्णव, वही प्लेट आप शिशी जगन्नाथ किचन में भी लाइए प्लीज. ये मेरी सच्चे हृदय से आपको humble request है. और हेयस माता जी, you are taking a class of small stories of Dhruv Maharaj, Prahlad Maharaj, and all the leelas of Lord Krishna and Srimati Radharani in a kids class. Mataji, we hear when we are sitting in a there is a small pond lake nearby our home. That is for me, Shishi Yamuna Maharani, Shishi Chamakunda, Shishi Radhakunda, and me and Drastias here. You know so well that how much responsible job for IT people, and now Drashti get promotion. So she has more than 8-9 years working, and then we hear that class and we are laughing and hearing. So this is the mood
आप जब सेवा करते हो तो that doesn't mean that it's only for 30-40 Vaishnava, but even I hear from Aji Kirtidas Sundari Mataji, she is also here. क्योंकि kids class में जो सुना है वही वापस सुनने में जो आनंद आता है माताजी. Thank you very much, Vrinda's mother, Rakshita's mother, जी, करुणामयी माताजी, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय, श्री राधा गोपीनाथ की जय, जय जय नित्यानंदा, जय जय गौरंगा. आप मेरी दृष्टि शिवानी के लिए प्रेयर करना कि आज तो वो आप सबके क्लास सुन रहे हैं, पर एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी आपकी तरह प्रेज करे. इतनी प्रेयर्स दृष्टि शिवानी के लिए करना. इंदु लेखा करुणामय माता जी की जय, दंडवत प्रणाम. श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय, गोपीनाथ की जय. कुछ ज्यादा बोला है तो मुझे माफ करना, बट जगन्नाथ किचन में 2-3 ही पोस्ट आती है. नहीं, बहुत सारा सीखना होता है. कोई जूनियर कोई सीनियर नहीं होता है, सबके पास सीखना होता है. प्लीज गिव योर प्रसादम प्लेट इन जगन्नाथ किचन. हरि हरि गौरांगा, दंडवत प्रणाम. श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय, गोपीनाथ की जय. Hare Krishna Mataji. Mataji, your plates are very, very opulent. Very nice offerings you have. So many offerings you have. जैसे आपको प्रीचिंग की मर्सी दी है श्रीमती श्री राधा रानी श्रील प्रभुपाद ने, ऐसे बस कुकिंग थोड़ा बहुत गोपीनाथ ने सिखाया है. Senior Vaishnav. Lots and lots of recipes, you know, Mataji. So wonderful. I mean, I remember there was a time when you said that it's so stressful to do everything, and you had so much work that time, and you couldn't do work in, I mean, you couldn't post your pictures in Jagannath kitchen, and you were so upset that that's not happening. And that time I remember that Mataji, you make like such authentic, traditional, sometimes the recipes that we don't even know, next generation doesn't know. But you have all the secrets and you are ready to share it with everyone. And so you are like, yes, this is my seva. I'm going to come back and I'm going to do it again. Doesn't matter how much time it takes, how much effort it takes. It's okay. And that's how you again joined back in Jagannath kitchen. You know, it's so nice. It's so nice that you see it that as a big service. It is a big service to everybody. Of course, someday we will also get the opportunity to come and have Prasadam Mataji. You make so much food for everybody for distribution all the time. It's very nice, so blissful, Mataji. Yes, Mataji. Hoping Drishti and Shivani can also join Bhakti Sangha, and then definitely they can. Drishti started join morning japa, that is from 6:30, sometimes 6:15, sometimes 6:40, 4 rounds. She started from last 2 weeks. Gopinath Mercy, all mercy of Srila Prabhupada, Srila Gurudev, Gopinath Mercy. And yes, Mataji, pray for me कि ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा 2-3 महीने के बाद. I will start again basic computer class and learn how to make videos, because both Shivani is working 12-13 hours in a hospital and Drashti also. So they said that mama हम आपको छोड़ के आएंगे, फिर आप सीख लेना. और वो वीडियो बना पाए, सब कुछ घर में है पर आता नहीं है, ताकि जो हम कहना चाहते हैं वैष्णव को वो अच्छी तरह, क्योंकि एवरीबडी इज नॉट रीडिंग द वॉइस मैसेज, बट वीडियो होएगा ना, भले ही वो 30 सेकंड या 1 मिनट का या 2 मिनट का, तो वो तुरंत ही कर पाएंगे. तो वो हम सीख ले और वीडियो बनाए जगन्नाथ की सेवा के लिए. इतनी प्रार्थना आप गोपीनाथ को करना. Wow. Mataji, definitely we will pray. Definitely we will pray that you make a video and we all watch that video. You have a nice YouTube channel, Mataji. We'll make it. YouTube चैनल नहीं चाहिए, सिर्फ भक्ति संघा की जगन्नाथ किचन के लिए छोटी छोटी, तो जो छोटे छोटे जो डाउट होते हैं ना, जैसे ढोकला की प्लेट को पहले स्टीम करना है और वो सब हम दिखा पाए, तो वो सॉफ्टनेस ऐसे स्पॉन्जी कैसे बनेंगी, तो वो दिखा के ही कर सकते हैं. मैं बोल करूंगी तो ऐसे नहीं होएगा, तो उसके लिए मुझे आना चाहिए वीडियो करना. आप जरूर सीख लेगी माताजी, आपके पास वो दृढ़ संकल्प है, तो आप जरूर सीख लेगी. You have that determination in you, Mataji. You'll definitely. Oh, Mataji, we are waiting for Bhakti Sangha Jagannath kitchen videos, Mataji. हाँ, वो नहीं चाहिए. So easy, so YouTube many. नहीं चाहिए, YouTube चैनल नहीं चाहिए. सिर्फ वो छोटी छोटी ढोकला कैसे
सॉफ्ट होने चाहिए, कैसे मेथी का थेपला स्टॉक बनाएंगे, वो छोटी छोटी बात मैं वीडियो थ्रू ही बता सकती हूँ। और मैं एक हाथ से काम करती हूँ, एक हाथ से फोन, ऐसे नहीं होता है, तो वो क्लियर नहीं आ जो बताना चाहते हैं कि जवार की रोटली और बाजरे की रोटली ग्लूटेन फ्री कैसे डाइट में ऐड करना है, क्योंकि वो कड़क हो जाती है, टूट जाती है, तो आप नेक्स्ट टाइम नहीं बनाएंगे। बट इफ यू सी द वीडियो जो मैंने गोपीनाथ किचन से लर्न किया है, सब सीनियर वैष्णव से, तो देन इट इज क्लियर, वो टूटेगी नहीं रोटी, तो आप नेक्स्ट टाइम ग्लूटेन फ्री बना पाएंगे। बस वो प्रार्थना करना। सॉरी टाइम ले लिया, माफ No माफ कर problem, देना। Mataji. No, तो उसके Mataji, लिए that is वीडियो a बनाना है। big initiative, Mataji. Very, very big initiative. We really hope you can get some help for that. And it's something we have also been thinking of for so long, और Mataji. वो गोपीनाथ ने वीडियो वो भी दिया है, कैमरा भी दिया है, बड़े बड़े वो स्टैंड भी दिए हैं, बट आता नहीं है कैसे करना है, और ये लोग के पास टाइम नहीं रहता है। पर दृष्टि ने बोला तू कर लेगी ना, तू कर लेगी, गोपीनाथ की मर्जी से कर लेगी, आप प्रे करना कि मैं कर पाऊं। Sure, Mataji, definitely pray. We all will pray. And Drishti Shivani also will soon chant 16 rounds. They become very serious in Krishna conscious. We will pray for them also. Lalitangi Mataji, can you please on your video, Mataji? Yes, Mataji, finally you are here. Sorry, Mataji. I joined couple of times, but I had to go. Thank you so much, Mataji, for your patience. And Vrinda Gopika Mataji, I don't have. ललितांगी माता जी नॉट सी, हाँ देखिए। Yeah. Wishing you a very, very happy Krishna conscious birthday, Mataji. And you already are very, very advanced. And I pray that Hare Krishna, Krishna, no. Sri Radha Gopinath continue to bestow his blessings on you and Srila Prabhupada and Guru Maharaj, so you can continue all your services. And Manashingadev remove the obstacles. And as so many people shared, we learn a lot from you, Mataji. Every single time when you post the videos, also you keep the phone in one hand and then you do your dishes, and so much you wanted to teach us, like this is how it happens and this is how it is. Very, very grateful to you, Mataji. And the way you grow your garden, my God, all the vegetables and flowers for the Lord. Amazing, Mataji. And I have so many things to say. I personally come whenever we come, even in the dead of the night, we come and knock your door also. You're freely welcoming us. And that day when we came, you were telling, you take 2 rooms and you were ready to sleep in the hall. Oh my God, I wish, Mataji, I should get one thing, like how to serve Vaishnavas. That's really, only through your blessings we can get, Mataji. So much your heart is always open. And in Panihati, when we used to come, we used to cut vegetables together. And that's when one time we met you. And then I was telling, I don't know where to stay. Immediately you offered. You don't know me, anything. You said, no, please come to my house. I don't know if you were joining in Bhakti Sangha at that time, right? That was like quite early. So really, Mataji, many times we have disturbed you. We have not got a chance to serve you like that. And the next day when we start, you used to get up early, make chivda and make sandwiches and so many things for the journey. So I don't have words, Mataji. I'm praying that all good wishes, many more happy, healthy returns of this day, and you continue the service and be an inspiration to all of us like this. So many souls are there to be inspired by you, Mataji. Thank you so much for your example. And on this day, please bless us, Mataji, to get a little bit of devotion and the attitude of service, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा जी, ललितांगी माता जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव की जय, श्री राधा गोपीनाथ की जय। आप हमारे लिए प्रे करना माता जी कि ये सर हमेशा संतों और भक्तों की शरण में न मारे, और ऐसा ही भक्ति संघा का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन मिले, और जो भी हमने आप सबसे सीखा है वो ही वर्ड टू वर्ड हम जो भी सेवा है राधा गोविंद महाराज ने दी है, छोटी सी कीड़ी के पैर जितनी सेवा, वो ही वर्ड टू वर्ड करे, और 20 मिनट और 30 मिनट की जगह आपकी तरह
अटेंटिवली एक कॉर्नर में बैठ के शिला प्रभुपाद की बुक सुनी। शिला प्रभुपाद मृता पिछले 1.5-2 से। माता जी अभी वो सिंसियरिटी आई और अभी वो टाइम आया, बिकॉज गुजराती पीपल आर स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली, सो वी आर 19 पीपल एंड मैं सबसे छोटी बहू थी, तो डेफिनेटली so many सेवा माता जी, but whatever it is Mataji, now my Falguni Bhabi also attending your Bhakti Sangha class. They are in India and they also become Richa Bhailu. दोनों को, मतलब मेरी 2 बेटियां और वो मेरे जेठानी की 4 को लेके मंदिर जाते थे। आज वो लोग ने भी सेवा चालू कर दी है। 1 राउंड, भले ही 1 राउंड पर वो करते हैं और मंदिर जाना स्टार्ट किया। और सबसे बड़ी बात तो एचती ललिता की माता जी, मुझे तब खुशी हुई कि मैं पिछले 4 साल से, क्योंकि वो ग्रुप में नहीं आना चाहती, तो स्पेशली पर्सनली उनको मैं रोज के मैसेज छोड़ती थी, छोटे छोटे बेसिक जो भी सिर्फ प्रभुपाद इंस्पायर करती थी। वो चारों ने एकादशी चालू कर दी माता जी। बहुत खुशी हुई कि ये पावर है भक्ति संघा में। ये अपनी छोटी सी शिवानी माता जी है वेस्ट वर्जीनिया से, उनकी बहन ने भी वापस ज्वाइन कर दिया, उनकी मम्मी ने ज्वाइन कर दिया। तो ये भक्ति संघा के माता जी, आप सबको लगता होगा कि 30-40 नो माता जी, मोर देन 30,000 वैष्णव आर अटेंडिंग ऑल योर क्लास। तो हमें कितना अटेंटिवली प्रिपरेशन करना चाहिए वो आप लोग के पास का है माता जी। और मैं वेजिटेबल कट करते 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 वो जब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी की कथा सुना रही थी और आप इतने सिंसियर वैष्णव ऐसे खड़े सुन रहे थे। कितनी डफड़ेस माता जी, मुझे अपने आप पे शर्म आती है कि इतने सीनियर वैष्णव के सामने मैं बेबी इंग्लिश में वो सब बैठे थे वैष्णव, उनको सुना रही थी कथा। माफ करना माता जी, आपके पास Mataji, बहुत so कुछ सीखा nice. है माता जी। Srinam Radha used to say how sincere you are. She was very scared. Why is this Mataji coming to my class? I am just a neophyte. This class is for beginners. She is 30 years old. Did you tell her that it's for beginners and all those things? She's very, very inspired, Mataji. You're such an inspiration for everyone. And also thank you for your chanting on video in the morning. Seeing your chanting and hearing your chanting and Vinita Gandharvika Mataji, others chanting, it's very, very inspiring, Mataji. Thank you so much. Srinam Hare Mataji, Krishna. yes Mataji. Actually, Srinam Gopi is very senior Vaishnavi, but very sincere. Mataji, we all need association of Vaishnava. अगर वैष्णव का एसोसिएशन नहीं मिलेगा ना माता जी, तो वो एच जी गौरांगी, एक ही मिनट लूंगी। एक्चुअली गौरांग प्रभु जी ने बोला था कि इट इज इन वाड़ा धाम, कि वो अग्नि होता है जो एक वैष्णव थे, वो भक्ति में रहे थे और फिर वो निकल जाते हैं, तो सीनियर वैष्णव जो होते हैं काउंसिलर, वो उनके यहाँ जाते हैं और वो फायर का जो होता है ना, वहां पे अग्नि होता है सब, तो वो एक अग्नि को निकाल के बाहर रख देते हैं उसके अंदर कॉपर बाउल में, और फिर वो चले जाते हैं। तो वो वैष्णव को समझ में आ गया और वो वापस उन्होंने मंदिर आना और वो नीचे रख दिया और फिर वो थोड़ा ठंडा हो गया तो उनको वापस फायर में रख दिया। तो वैष्णव वो कुछ बोले नहीं और वो सीनियर काउंसिलर चले गए वहां से। तो दैट वैष्णव अंडरस्टैंड कि वैष्णव एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वैष्णव एसोसिएशन नहीं होएगा तो अग्नि जैसे बुझ जाता है, अग्नि का कोयला बाहर निकालेंगे ऐसे और उसको वापस डालेंगे तो वो वापस प्रकाशित हो जाता है। वैसे वैष्णव एसोसिएशन के बिना हम भक्ति में नहीं टिक सकते, और दैट इज भक्ति संघा। 3.5-4 साल हो गए और मुझे याद है अजी ललितांगी गोपी कि हमने सिर्फ उन्होंने देखा था हमारे सामने, अजी प्रीति विलासिनी गोपी ने, कि उन्होंने बताया, उसके बाद 3 वीक तक हमने अटेंड नहीं किया था भक्ति संघा, फिर हमने अटेंड किया और ये जो रस धारा बह रही थी वो कथा में। तो कई बार वैष्णव कुछ बोले बिना सिर्फ आइज से, जैसे हम छोटे थे तो मम्मा आइज से ही हमें बता देते थे कि दिस थिंग इज नॉट फॉर यू और यू हैव टू डू दिस। तो लाइक जैसे ही, भले ही आप सब छोटे हो उम्र में, पर आप सब बहुत भक्ति में आ गए हो, बहुत भक्ति में आ गए हो। और आज ये टाइम आया कि हम वो रीड करते 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 हमें छोटी छोटी कीड़ी के पैर जैसी सेवा मिलने लगी कि यू हैव टू डू दैट सेवा। पता है जी लीलांत लज्जन की माता जी वो सेवा के लिए क्वालिफाइड नहीं है, पर प्रभुपाद की मर्जी से और वैष्णव की प्रेयर से सेवा मिली है। प्रार्थना करना कि वो छोटी सी सेवा कर पाए जी ललितांगी गोपी अच्छी तरह माताजी, मैं प्रार्थना करूंगी आप बड़ी बड़ी सेवा करेंगे। हरे कृष्णा।
अब नहीं, बड़ी बस बड़ी सेवा कीड़ी के पैर जैसी छोटी सी सेवा मिले, बस वो हम पास हो जाए। एच राधा गोविंद महाराज श्री राम वृंदावन धाम से जो है जी लाल गोविंद प्रभु जी के महाराज है, सबके महाराज है। छोटी छोटी सेवा में हम पास हो पाए। वो भक्ति संघ का ये 3 साढ़े 3 साल थे ना, दैट इज द बेस। अगर ये नहीं होता तो कुछ नहीं होता। पता नहीं कहाँ वापस 84 लेखी योनि में घूमते हो जाते भक्ति संघ के, क्योंकि जितना अटेंटिवली हम सुनेंगे, बहुत अटैच है श्रीधाम वृंदावन धाम से। पापा ने बताया था कि जहां भी श्री भागवतम होता है वो धाम हो जाता है, दैट इज द प्लेस श्रीधाम वृंदावन धाम। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल भक्ति संघ टीचर्स एसोसिएशन। और आप पीछे रहते हो जगन्नाथ जी जगन्नाथ प्रभु जी की तरह बैक साइड डायरेक्टर हो। सब नए लोग को, वृंदा की मम्मी को, फिर ये अपनी इंदु लेखा करुणा माता जी को, सबको आप आगे लाते हो, इंस्पायर करते हो। नो माता और जी, मुझे मैं भी कुछ नहीं माता कर जी। रही हूँ, दैट्स और रियलिटी है। बट सिर्फ ये सब इंदुलेखा, करुणा माता जी, विनीता गंधर्विका, प्रीति विलासनी, कीर्तिरा सुंदरी, ये लोग हमें बहुत सारा टाइम इसमें डालते हैं, स्पीकर्स को बुलाते हैं, और बहुत टीम है ना, वो सब लाइक दे आर पुटिंग इन यूट्यूब, फेसबुक, सो एंड ये ऑल द इजी गोविंदा नहीं है क्लास माता जी। टीचर्स। बैक साइड जो मुझे तो आता नहीं है, पर मैं देखती हूँ दृष्टि को, जो बैक साइड सेवा है वो इजी नहीं है। और आप प्रार्थना करना कि दृष्टि भी थोड़ी सी सेवा ले, आप उसको भी एंगेज करना कि दृष्टि प्लीज डू दिस सेवा, दिस ये आप यूट्यूब पे डालना है या फिर उसको रिकॉर्डिंग करना है। वो दृष्टि को भी सैटरडे संडे सेवा देना, ताकि वो भी श्रील प्रभुपाद की सेवा में एंगेज हो जाए। बस इतनी प्रार्थना। सबको चुन चुन के ये सबको, जी राधिका शिवानी माता जी की जो सिस्टर है, वो सबको थोड़ी थोड़ी सेवा देना, तो सबको प्रभुपाद की मर्जी मिले बस। वंडरफुल माता जी, हरे कृष्णा माता जी, मैं humble obeisances to you. कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव जी गोपीनाथ की जय। बहुत अच्छा लगा, आज हमने 1.5-2 घंटा ले लिया सब वैष्णव का, और ट्रस्ट में माता जी बहुत अच्छा लगा कि यही हमारा रियल फैमिली है, और कोई वैष्णव अपराध ना करे, और दास दासानुदास भाव, बस श्रील प्रभुपाद की सेवा, श्रील गुरुदेव श्री राधा गोपीनाथ की सेवा करे। कुछ तो हमने कर्म किए होंगे लास्ट बर्थ में, कि माँ पापा से गढ़बुद्धि में संस्कार मिले, सास ससुर जो घर में दिया भी नहीं होता था, वो मेरे ससुर ऐसे बैठ जाते थे, और जी किशोरी माता जी आते थे, छोटे से थे वो, तभी तो कॉलेज में मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आते थे, पर वो ध्यान से सुनते थे। और फिर 2 वीक के बाद तो उन्होंने भी किशोरी माता जी को दंडवत प्रणाम, क्योंकि वो ईगो होता है मटेरियलिस्ट, स्पेशली मैन में, वो कभी नहीं झुकते। पर मेरे ससुर जो एक उनका वर्चस्व था, पर उन्होंने हमें कभी खस नहीं कहा, मतलब मुझे एक भी शब्द नहीं बोला, बहुत रिस्पेक्ट दिया। और वो एकादशी करने लगे और प्रसादम कुक करते थे, और वो दंडवत प्रणाम किशोरी माता जी को करते थे। तो ये वैष्णव में क्वालिटी होती है कि प्योरिटी इतनी होती है कि बड़े बड़े लोग को झुका देते हैं। क्योंकि ऐसे बोलते हैं गुजराती में कि ठाठड़ी में जाएंगे तब तक कृष्णा कॉन्शियस नहीं लेंगे, और वो इम्पॉसिबल है कृष्णा कॉन्शियस लेना। पर सच में वो ले पाए तो वो एकादशी के दिन भगवत धाम गए, और उन्होंने प्रसादम के लिए मेरे जो सिखाया ये सब, वो पापा, ससुर, माँ, दादी माँ और गोपीनाथ के सबसे सीनियर वैष्णवों से, क्योंकि पूरा दिन यही काम किया है माता जी। और कैसेट मिलती थी पहले तो, हरिप्रिया किशोरी की मम्मी, किशोरी की जो छोटी बहन है वो अभी लंदन से राधा लंडन से, वो कैसेट लेके आती थी, वो टैप में लगा के सुनते सुनते खाना बनाते थे। तो वो ही जो खाने में पॉजिटिव एनर्जी आई, तो जिसको डिवोटी बनाना इम्पॉसिबल है, फाल्गुनी भाभी आज इतने एकादशी करने लगे, भले एक राउंड करने लगे। तो ये प्योरिटी होती है। सुनते सुनते जो प्रसादम बनाते हैं तो वो सब पॉजिटिव, श्रील प्रभुपाद की मर्सी, श्री राधा गोपीनाथ की मर्सी वो खाने में आती है, और उससे डिवोटी बनते हैं माता जी। बस मैं तो इतनी छोटी, इतना इतना मैं समझ पाई हूँ, बड़ा बड़ा तो समझ में नहीं आता है। बड़ी बात है माता जी ये। आई मीन you'll keep your video open and आप कुक कर रहे हैं, हम आप क्या कुक कर रहे हैं हम भी देख
लिखते हैं. And my Hindi is very broken, but I understand very माता जी, nice, Mataji. 65% understand English. हरे और कृष्णा. माता जी मेरे भाभी के मम्मी पापा भगवत धाम गए कोविड में, उनके भैया गए, तो रात को 2:30 हुआ था और सडनली उन्होंने फोन किया कि मैं तो बोल नहीं पाती हूँ, आप बोलिए. तो माता जी कुछ नहीं बोल पाते थे क्योंकि वो कैंसर से लास्ट स्टेज पे थे और बहुत यंग थे, 42 इयर्स के. तो हरे कृष्ण महामंत्र किया और ये बुक खोल के सिर्फ भजन किए माता जी, और कुछ तो आता नहीं है. पर वो देखा कि वो, मैंने तो नहीं देखा क्योंकि मेरी आंख बंद हो जाती है जब भी कुछ बताते हैं, घबराहट में नहीं कर पाते. पर जो भी आप लोग से सुना था वो थोड़ा बहुत 1-1.5 घंटा बताया और फाल्गुनी भाभी बता रही थी कि वो पीसफुली वो धाम में गए. तो ये मतलब भक्ति संघ का ये एसोसिएशन का ये बेनिफिट होता है कि चलते फिरते सबको वो कृष्ण कथा जैसी गांडी गबली भाषा में हमें आता है ऐसे सुनाते रहना है. पहले तो वो लोग हमें पागल समझते हैं, ये क्या पूरा दिन हरे कृष्णा करते रहते, पर आज वो ही लोग इतना रिस्पेक्ट देते हैं. आज वो एकादशी करने लगे, वो संडे मंदिर जाने लगे. सो दिस इज द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव, श्री नित्यानंद एंड श्री चैतन्य महाप्रभु. माता जी इम्पॉसिबल थिंग है कि जो दिया भी नहीं करते थे, जो आरती भी नहीं करते थे, वो लोग आज कृष्ण की पूजा, लड्डू गोपाल की, मेरे घर में मैंने दिया था श्री लड्डू गोपाल, तो वो वापस मंदिर में रख के आए थे, वो लेके आए और वो सेवा उन्होंने चालू की. तो ये मर्सी है नित्यानंदा की, चैतन्य महाप्रभु की. माता जी you can non-stop preach for 24-72 hours, Mata ji. You have that much energy, that much compassion, इतना भक्ति है आपके हृदय में. आप कुछ सेवा करें भी तो वो नहीं, you don't stop it. Really, Hari bol to you, नहीं माता जी, एक ही आता है, कुकिंग आता है और कुछ नहीं आता है. हरे कुकिंग कृष्णा. से, कुकिंग राधा रानी ने एक ही सेवा दी है, कुकिंग की, और नहीं दी है माता जी. वही चाहिए माता जी, वही चाहिए. हरे कृष्णा. ललिता विनीता माता जी, गोपी sorry अंजलि to take so much time. I मैंने came in the बहुत टाइम last. I लिया, don't know मुझे who माफ is करना going सब next after वैष्णव me. का, पर हरे बहुत कृष्णा. आनंद है. आप सबकी कृपा हम पे बनी रहे. हरि हरि गौरंगा, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम. और ये सर संतों और भक्तों की सेवा में नमा रहे, इतनी प्रार्थना करना. श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव की जय, गोपीनाथ की जय. दृष्टि शिवानी को आशीर्वाद देना कि आप सब जैसे श्रील प्रभुपाद का मैसेज ऑल ओवर वर्ल्ड में भेजे है. चिचानुआ माता जी, अच्छी किशोरी माता जी की तरह. हरे कृष्ण. अभी तो वो पापा पगली चल रही है, जैसे 11 महीने का, 9 महीना 10 महीना वो स्क्रॉलिंग करते हैं, घिसट के पेट से चलते हैं, फिर वो सोफा का पकड़ के चलते हैं. ऐसे शेट में 2 साल के बाद दृष्टि आई है. प्रार्थना करना कि वो आपकी तरह ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रीचिंग करे, श्रील प्रभुपाद का मैसेज पहुंचाए. माफी चाहती हूँ माता जी, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, पर बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया. सब वैष्णव के चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम. बहुत आनंद आया. हमको भी बहुत आनंद है माता जी, आपकी जन्मदिन ऐसा हम लोग मनाया ना जूम कॉल में, तो बहुत ही आनंद है, बहुत ही आनंद है. थैंक यू सो मच. आपने बोला है ये हमारी फैमिली है. यस, ये हमारी फैमिली है, तो हम फैमिली के साथ हम जन्मदिन मनाए हैं, तो बहुत खुशी मिल गया माता जी. थैंक यू सो मच. I think Mataji, we should start one Hindi Bhakti Sangha. Yes, right? No, where we can do like how Lavanya Mataji is doing, Srimati Mataji is doing in Telugu. All the Hindi speaking people can also do Bhakti Sangha in Hindi. So many people will come. Mataji can coordinate that and give lecture. नहीं माता जी, नहीं. भजन बोलेंगे तो करेंगे, कीर्तन नहीं होएगा, कीर्तन करेंगे पर वो नहीं होएगा, लेक्चर नहीं होएगा. Okay, Mataji, sorry, I have to leave now. Okay, Mataji. Everyone is done? Yes, Mataji. Everybody is done in the call. Yeah. Everybody got opportunity. चलो, मेरी वजह से सबको बिठा के रख दिया, खाना पीना सब छोड़वा दिया, माफ करना. Happy birthday once again, Mataji. Vancha kalpatarubhyasya kripasindhubhyeva paridaramyo vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. जय नित्यानंदा, जय गौरंगा, वृंदा गोपिका माताजी की कोटि दंडवत प्रणाम टू ऑल वैष्णव. श्री नित्यानंदा की जय. श्री गौरंगा Radharani की जय. Mataji, can you come on video? It's long since I saw you.
Shri Shri Radha Gopinath ki. Radharani Mataji. Okay, I think she's busy. I'm also not attending Govinda class nowadays, so I'm missing all of you. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Hare Krishna. हाँ हरि बोल. Hare Krishna. Yeah, Mataji, Radharani Mataji, we are missing you. I'm so happy to see you today. Thank you, Mataji. I'm also missing. Yeah. Hari bol. Radharani I'll try Mataji to ki jai. join. You are given a promise to me that you will come for morning Shri Shri Bhagavatam introduce. You will, your plate will come in a Shri Shri Jagannath kitchen seva. You are given association to little Laddu Gopal and Radha Gopi for fireless cooking. So your seva is and morning japa, all seva we wants to Mataji with nice sari, with जब जपा attentively होता है ना माताजी, तभी आप जो बोलते हो इसकी इफेक्ट अदर वैष्णव को होती है राधिका माताजी. तो आप सुबह में वहां वृंदा की मम्मी की तरह आ जाना. भागवतम में जो स्टीफनी माताजी आती है, नहीं देखा है आपको, 1.5 महीने से नहीं देखा है. Are you okay, Mataji? Are you okay, Radharani? Yes. Yeah, I'm okay, Mataji. Mataji is a little busy, Mataji. That's why she's not able to make it up. She's doing job also, right? Oh, please forgive me. Please forgive me. कोई बात नहीं, फिर भी आना माताजी, फिर भी आना. सब सेवा में जितना हो सके इतना आना. सैटरडे संडे आना. Sure, Mataji, I'll try. Thank you so much, Mataji, for your love. Everybody, thank you, Lalitangi Mataji, Indu Mataji, Vinita Mataji, everybody. Thank you so We all much. miss you, Mataji, but we know that you'll come back once everything. Today I was saying that I missed. Yeah, just now she was telling, I miss Radharani Mataji. Just now. And I was showing a picture of her. Yeah, you were showing the picture. Phone lo chupistundi. I miss you too, I miss Vrinda. Mataji ani cheptundi. Where's the picture? Yes, Mataji, actually daily in the Japa also, I used to see you, but from past 15-20 days, like I'm not able to see. I was also thinking like why Radharani Mata is not coming. She also greets the speaker. She's not coming there also. Yes. Also. With nice sari, I'll try nice to come, smile. Mataji, for couple months. Then I'll again come, Mataji. Not couple I months. might go for Told me India, that I so will that's come. the reason I took some break. Yeah. Thank A photo chupistundi midi. Indaka photo chustundi phone lo. So she was telling that when she was seeing that phone, she was telling Radharani Mataji, I miss her. I miss her. She was telling. Thank you, Vrinda. Yeah, I heard from couple your other craft devotees class, also, your their cooking kids class. were saying. Yes, cooking class. Yeah. Prahlad also remembers, Mataji, your craft that you taught, and he made some things. And then he used to say you take the recipe for that, what's that? The cream cheese cupcake. You come up with so many. Ekadashi cupcake. Yeah, Ekadashi cupcake, and also cream cheese cake. Instead of that, you made a cupcake. That was very nice. Thank you so much, Mataji. I'm not doing anything and I'm asking you to come. No, Thank you, Mataji. Yeah, actually, my mother-in-law, she was not feeling well. I might go for India anytime. So that's the reason I just took some break. Yeah. Okay. Yeah. Take care, Mataji. Hare Krishna. Yeah. After Thank all you. that, you still made the video today. So I was very happy to see that. Yeah. Only I Radharani love Vrinda Mataji can do Gopika that. Mataji. I love everybody, Mataji. You made for everyone. So sweet of you, Mataji. We are all very lucky to have you in the group. Harita Mataji's face is like a picture, like it's drawn. Right. So nice. Sri Divya. Huh? Sri Divya. I'll send you a picture of her later. Sri Vidya. Sri Divya. Sri Divya. One day Mataji has shared, right? Like she's actress. I'll show you. Okay. Hare Krishna, Vrinda Mataji, congratulations on the job. I just heard that you're also working. Everybody's working. No, I start work from next month, but only 15 hours, Saturday, Sunday for Gopinath Seva. Wow. Akshita's number also is working. Actually, I put the background screen right. Maybe because of that, it is looking little bit different. No, Mataji, we can see your face and background separately. Background is also beautiful.
Thank you all very much, So Mataji. happy that I joined this session, Mataji. It's been long that I was in this association. Due to work, I'm so much stuck up. Somehow I want to leave that, but not able to, get out of that. But hopefully I'll get more time to join you people and listen more Krishna Katha, like Vrinda Gopika Mataji said. I also want You to were there do always more with in us, your Mataji. You were association. there in early morning chanting. You are there in early morning class. You are posting all the links on Facebook. You're doing very nice service, Mataji. Just But not known I'm to missing anybody. the Chaitanya Bhagavat class, Mataji, and kids classes also. I like to attend those classes because we get so much to learn, and every time we will be in that mood. Like Vrinda Gopika Mataji said, I feel the same. We will be in that mood continuously if we are listening to the classes. That's why I also always try to join. Because of this hectic schedule, I am missing everything, and I'm feeling that what I should say, that separation. Like why I'm into this, why I'm not getting into the Bhakti Sangha We will more. see in all the H.J. Adi Kadada Prabhu class, H.J. Amendra Prabhuji's class to you also, in all class, whether it's evening class or morning class or afternoon class. So you are so enthusiastically attend all class. Yeah, actually, I'm trying, like, I try to watch the videos, Mataji, later on. At least that will, boost up and boost up my, mood and everything. So at least that way I am trying to listen the classes, but otherwise really feeling that separation. Thanks for all the association, Mataji. Vrinda Gopika Mataji, as Radhika Kasturi Mataji, all Mataji said, you're really like a mother, and you show so much love, Mataji. We like no expectations and only giving. That humbleness and that attitude, like we all, I hope like I should also get that and be so humble and so expressive like you. I feel that. All Guru Srila Prabhupada, Srila Gurudev, Shri Radha Gopinath, all senior Mataji. Whatever learned from them, as it is said, as it is, Mataji. All credits goes to all senior Matajis of Shri Radha Gopinath. My Nani, my Papa, my father-in-law. Okay, Matajis, bye-bye. We'll meet again for next birthday party like this every day on the call. Hari Bol, Bye. Hari Bol. Hare Krishna, All Jai Jai Mataji. Nityananda, Jai Jai Gauranga, Vinita Shri Mataji, Radha thank you Gopinath. for your service, Mataji. Vinita Mataji. Hare Krishna, Priti Mataji, Mataji. everybody are there, Krishna. Mataji. I'm not Hare alone. Krishna. Thank Shri you. Radha Gopinath ki Jai, Shri Jai, Prabhupada, Hare Shri Krishna. Gurudev ki Thank you, Jai, Mataji. Jai Jai Priti Nityananda.